what is CTF and what is it used in cyberspace. We'll learn image steganography. Basically, what image steganography is, it's basically when you hide data inside an image and you send it to other person to decode it. So that's basically you can hide anything like a text file, like a zip, or an image inside an image, anything. And we'll learn some OSINT. Basically, how those hackers on in movies learn about everything about a person they wanna hack and stuff through social medias and basically the internet. Guys, I'll be needing your inputs if I ask questions because we just had an offline session and it was absolutely amazing. Everyone talked like we had a very interactive session. So if you guys could open your mics, it will be a lot helpful. We can have a conversation and like we both will benefit from it. Sure. All right. Yeah. So OSRND, as I explained, it is same thing. Are in your mic. Okay. Someone said. Yeah, Harshit. नहीं किसका mic है? Uh, I, Ayush, yeah. Yeah, you are audible, but your your voice is too low, but background में जो noise disturbance है, that is too high. Okay, if you could send in chat, that would be helpful too. Okay, so we'll start basically modern day ciphers. So have you were you able were any of you online during yesterday like evening on TechShala ka general chat? Guys, as I said, I would need some answers. Yes, yes, we were. Yeah, so basically some of you were not on, some of you were. So we'll learn what ciphers are in cyberspace and stuff, and then we'll learn a bit about web hacking, but not the complete one. It will be a basic one, like related to sources, how you will be able to like do some web CTF and stuff. So all of these topics will have your skills. You will learn some skills on these topics which will be used to do or crack Solstice 21, which is basically our major event this sem. So before like starting with the whole PPT presentation and practical stuff, a bit about me. Hey guys, so I'm Malpesh Bhagwatkar. I'm current cybersecurity track head, and I have a lot of experience. I've completed more than 5 internships in cybersec domain. A few of them were web application pen tester, basically web application security testing, mobile application security testing, and others were blogging and stuff related to cybersec. And I do not know any like specific languages and stuff. But I do know is Java, JavaScript, Python, shell scripting, and PHP. And there are some web hacking nahi, Windows hacking and Linux hacking of frameworks that I have listed down. Wi-Fi is a Wi-Fi hacking frameworks that I master in, and I do know OWASP top 10. Basically, OWASP top 10 is top 10 vulnerabilities in web and mobile application. So that's about me. In today's session, what you will gain from those from today's session is basically learn the basics of CTFing in cyberspace. And since do you know about DSA?
So basically, DSA is data structures and stuff. So a lot of people who like to code and stuff, they will do data structures ke read problems on lead code to level themselves up, level themselves up, or they make projects and stuff. So CTFs are the way in cyberspace to get level up in terms of knowledge. And you will also learn how to hide the data inside images and uncovering them like a hacker, solving riddles, solving cryptic messages, ciphers and stuff, which are very easy to crack. Just don't fear कि वो बहुत hard होगा. It's just like tool में एक input दे दिया and then you have to just read the output and stuff. We'll learn a basic OSINT, which is wait, am I audible, right? I'm Yes, you are. audible, right? Yeah, okay. So we'll learn a basic OSINT, basically professionally stalking someone or finding information about them, या फिर finding information about something efficiently and stuff. So it also, this session is not only for the cybersecurity enthusiasts. So because in 2023, if you are a web developer or anyone who works in or tech or IT industry, you need to know these techniques to bridge the gap between the coding and developing secure code. Whenever you handle data between a server and your mobile application, you have to encrypt that data. So even if you are a mobile app developer or a web developer, you have to like learn this technique one day. So we'll start with Cicada 3301 and Internet Mystery. I probably think you have seen the video, right? Have you all seen the video? Yep. No, Okay, no, some of you us didn't. haven't. So, like a short explanation would be really No, no, good. no, 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 no. I will watch it like ten minutes, because if you don't know the whole Cicada 3301 thing, you cannot crack Solstice. Solstice is basically a newer version of Cicada. So I'll be showing you the video now. And Okay. okay, Ayush, yep, web hacking होगा, but like बहुत bare minimum होगा. I'll teach you how to like web hack and stuff. CTF के लिए, but that will be at the end of the session. So I will start with the video, and I'll be asking questions related to the video in between of the video. Like video is in part of 2 or 3. So wait, not on YouTube. Wait. I'll reshare my screen so you guys will be able to will be able to listen to video. Are you able to listen? No, Uh, you cannot hear the video, right? yeah, no, we can. We cannot. Okay, okay. Wait, I'll change. The anonymous Are author, who you went by able the to now? four-digit pseudonym 3301, challenged Yes. users to uncover a Okay. message hidden within the image. Unbeknownst to those who stumbled across it, someone Just let me know. on the 4th of January 2012, a user on 4chan posted this image to the site's infamous B or random board. The anonymous author, who went by the four-digit pseudonym 3301, challenged users to uncover a message hidden within the image. Unbeknownst to those who stumbled across it, someone had just set in motion one of the most elaborate scavenger hunts the internet has ever seen.
Within minutes of the image being posted, someone discovered that by opening the file using a text editor, an appended string of readable text could be found. The string contained a cipher that, once deciphered, formed a link to yet another image. At first, this appeared to be a dead end, but using an application known as outguess, users were able to extract hidden information embedded within the first image. The extracted information led to a subreddit, which in turn contained information about a book. The book, along with a code, could then be used to uncover a phone number that, when called, played this pre-recorded message. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final dot. 301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. By the following day, the initial image had been reposted all over the internet. A growing community of armchair detectives sought to unravel this elaborate puzzle, but no one was quite sure what to make of it. What was the puzzle for? Who was behind it? What happens when you reach the end? Some naturally dismissed it as an elaborate joke, while others perceived its complexity as evidence against it being the work of a mere troll. Before long, rumors began to circulate that this could be the work of some secret society or intelligence agency, with the intent of recruiting individuals proficient in cryptography, steganography, and other related fields. Of course, it was nothing but a rumor. The 2 missing numbers mentioned in the recording proved to be the dimensions of the original image. After multiplying the width and height with 3301 and using the product as a web address, users were taken to a website. The website consisted of a countdown as well as an image of a cicada. When the countdown reached 0, the page was updated with a list of coordinates. The coordinates pointed to locations around the globe, 14 locations in 5 different countries. It was now up to participants living near the specified coordinates to rise from their comfortable armchairs and venture outside. Those who believed Cicada to be the work of an organization now felt their beliefs had been justified. In their opinion, only some international collective possessed the means and resources to create a scavenger hunt of this magnitude. This was not the work of your average troll. No, this had to be something else. At each location was a poster with a cicada symbol and a QR code. On the bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. You can see the corners, as you say, I just kind of ripped it off. The codes linked to an image, the image contained a riddle, the riddle led to a book, and the book led to a website. But here, the puzzle took an unexpected turn. Only a select group of first arrivals to this website were accepted into the final stage of the puzzle. The site eventually closed down with the message, "We want the best, not the followers." The finalists were also warned not to collaborate with others nor to share the details of this private stage of the puzzle. Well, given that we know this, it's safe to say that not everyone heeded that warning. But those who did presumably advanced through the final stages before reaching the very end of the puzzle. Yep. So part one completed. So this was the story of part one. Uh, can we have a revision on what was the whole cicada thing? So what was the first thing they received? Can I can we do Q&As? If you have listened to the video, you will be able to answer it. So it started off as a big scavenger hunt at 4chan, Mm-hmm. Yeah. and many people were like quite excited for it. So firstly, they started to decipher that you know uh, that link. It started off by viewing the image from Notepad, where you were able to see that embedded code, that extra addition code, and that's where the entire story began. Yeah. So let me revise the story for you. So
it's not like कि मैं सिर्फ वीडियो दिखाना दिखाना चाहता हूँ तुम लोग को. This is actually the whole flow. You have to understand the video. We will be sharing the video again, but rather than like 1000 बार वीडियो देखने से अच्छा एक ही बार में समझ लो, you will understand the whole actual flow of Solstice. So they received an mail. They got a steganography image, basically an image that had link cipher link to it. What is cipher link? Basically cipher is basically clear text. Abhi, if you wait, if you open a website and you can read anything on it, it's in English, right? You will be able to read it. But when there is some algo, like let's say base 64 या फिर rot, so when you apply these algorithms to these particular strings या फिर words, those get converted to some a random number of string, so that it is not readable to humans, but it is readable for computer, right? So that's basically what a cipher is. A human cannot read it, but a computer can. Okay, so I think I explained that pretty well. Any questions on ciphers and stuff? We'll learn actual ciphers in like during the workshop today only. So wo hua, they got a link to another image led to a book, another image led to a book led to a code, and code led to a phone call led to a riddle. Basically image का जो dimensions था, like अपने जैसे डिस्प्ले में होता है 1080 बाय 1920 या फिर 1920 बाय 1080, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन लेड टू आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस मतलब कुछ नंबर्स उनका, दैट दोज मल्टीप्लिकेशन टेकन प्लेस आफ्टर, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है, that was the original IP. So when they visited the IP, they they were prompt with a timer. So basically मैंने शॉर्ट में बता दिया. I don't want to repeat the whole flow क्योंकि स्टेगनोग्राफी एक फेज में ही दो दो तीन बार हुआ है. So at the end of this phase, they received an website with like timer. और फिर वो timer खत्म होने के बाद they let a few people or teams in, and they close the website. So basically elimination of best, not the rest. So we'll continue with the video now. This is now the part 2 of the whole event. After nearly a month of silence, an image I hope you're able to hear the whole video, right? Yes. Okay. appeared on the subreddit announcing the conclusion of the puzzle, and just like that, the hunt was over. Cicada had supposedly found the highly intelligent individuals they were looking for, and whatever happened to them is a bit of a mystery, but more on that in a moment. The complete lack of an explanation was perceived by many as confirmation that the puzzle had been nothing but a wild goose chase intent on wasting everyone's time. After all, questions raised by the original image remained unanswered. What was the puzzle for? Who was behind it? What happens when you reach the end? However, as it later turned out, this was only the beginning. Whomever was behind this intricate game had the foresight to include an authentication code known as a PGP signature along with every clue. This allowed users to verify that an image or message was actually from Cicada, as opposed to some imposter seeking to derail or hijack the puzzle. Cicada had repeatedly warned of such false paths and insisted that any message lacking a valid PGP signature should promptly be disregarded. That's why this image, posted exactly a year and a day after the first, provoked such a frenzy. After a year of lackluster imitations, this image finally matched the official PGP signature. Cicada was back, and it was time for round 2. The second puzzle was not too dissimilar from the first. The image enclosed a message, the message led to a book, the book produced a link, and gradually the puzzle unfolded. At one point, a recording titled The Instar Emergence was uncovered.
Another clue led to a cryptic Twitter account, which then led to an image. The image proved vital to the progression of the puzzle, but the inclusion of this runic alphabet would remain a mystery for quite some time. Much like the first puzzle, the second swelled into the physical world when a list of coordinates compelled participants to once again take to the streets in search of enigmatic posters. This time it was 8 locations in 4 different countries. But eventually the trail went cold once again. Another select group of first arrivals had been accepted into a final, private stage of the puzzle. Unlike the first puzzle, the second did not conclude with an official message from Cicada. The trail merely went cold, and Cicada vanished once more, leaving us no closer to an explanation. However, this was still not the end. Okay, so can we have a recap of second session, second part or the puzzle, right? So what they did basically, when they got their first set of individual who knows everything about what they want, they started one after a year they started looking for another basically a batch of individuals. So the basically the same thing repeated. The image had some cipher text in it, the image steganography stuff. So that image led to another website now, but the website this time was a Twitter account. The Twitter account had a book, let's say a book with an unique text basically to refer. So that led to another website, and again website led to an image led to another website or an IP. ये पूरा वापस, it's basically a copy of first stage but a bit harder for you know to increase the quality of the participants and stuff. So this is was the second part, and now comes the third. At the beginning of 2014, it was time for round 3. Once again, the image enclosed a message, the message led to a book, the book produced a link, and suffice it to say, it was more of the same. Except this time, the puzzle seemed to revolve around a strange book. The book was titled Liber Primus, meaning first book in Latin, and was evidently written by Cicada. The runic alphabet uncovered in 2013 finally made sense, as the book was primarily written in runes. Even so, the meaning of the translated pages were cryptic at best. The book consisted of various philosophical and ideological ideas and appeared to be their manifesto. Many have since compared the strange writings to that of a cult. Nevertheless, the book also comprised a myriad of clues and codes. For example, this page advised participants to seek out a website on the deep web, but the site remains undiscovered. Another page led to a website containing yet another recording titled Interconnectedness. However, a significant portion of the book has yet to be translated. The runic text on some of the pages appear to be obfuscated by layers of encryption that has yet to be decrypted. Of the 74 pages featuring runes, only 19 have been successfully translated. As 2015 came and went without the launch of a new puzzle, many came to suspect the Liber Primus had to be completed if Cicada was to return. This was more or less confirmed at the beginning of 2016 when Cicada encouraged a re-examination of the book. More than 4 years have now gone by with minimal progress and near complete silence from Cicada. Questions raised by the original image have gone ignored. What is the purpose of these puzzles? Who's behind them? What happens when you reach the end?
When the initial image appeared on 4chan back in 2012, many assumed Cicada 3301 to be an alternate reality game designed by a corporation to promote a new service or product. For example, Microsoft developed an elaborate ARG back in 2001 to promote the film Artificial Intelligence, and a similar viral marketing campaign was used to promote the release of Halo 2. But the release of subsequent puzzles and the complete lack of commercialization has more or less eliminated that possibility. If we choose to believe some of the leaked information from the private end stage of each puzzle, then we do gain some insight into who this group might be. For example, at the end of the first puzzle, finalists supposedly received this email. In it, Cicada described themselves as an international group who believe that privacy is an inalienable right. The aim of each puzzle is to recruit like-minded individuals in an effort to develop private. Okay, so I hope you got the basics of the part 3. It was basically same as part 2 and 1. They got a image, but this time the image led to a book, which is Primus Libus. So book had unique text which needed to be decrypted. Decrypted yani basically convert those unique text to human language, so that it can be solved. So that's gonna be our like complete flow of the event. If you have missed something in the video, we will share the video later anyways, and I'll share some cheat sheets, so you can refer to those during the event, or like tomorrow. So we'll start with the actual stuff. Basically, what is CTF basics? Wait a second. Yeah, so basics of safe CTF. What is CTF? In cyberspace, and CTF is called, no, not in cyberspace. Basically a CTF is capture the flag. Uh, you have some challenges in front of your faces. You have to hack it, crack it, or solve the mysteries, or decode the encrypted text to get a basically flag. So what is a flag? Flag is basically and text which looks like this: flag curly braces some underscore flag. Now it isn't Kalpesh, necessarily. we are not able to see the changes you are doing. Yeah, Oh the video is okay, still okay. stuck on that video screen for us. Oh yeah, wait, sorry for that. I'll reshare. I think you are able to like view the screen now. Yes. Okay, so yeah, basically this is the cheat sheet. ये बाद में refer करना है. So what is a CTF? CTF is basically a capture the flag event where you have to hack, solve, or crack or decode cryptic messages and stuff to get a flag. So what is a flag? Flag is basically and text like this. I hope you can see it. Yeah. So flag करके रहता है, and the actual flag will be within those curly bracket. So for this instance, some flag is actual answer, so you have to be lookout on something like this for the sources events too. So yeah, in cybersecurity space, commonly cryptic messages, cryptography algorithms are used to, make the whole CTF harder, and you have to sometimes exploit some vulnerabilities, crack messages to get those flags. Okay, yeah. So that's basically what a CTF is. Capture the flag event. It's basically similar to coding events, but you have to decode stuff here. Now there are two types of CTF. The one we Solstice are gonna take is Jeopardy style. Jeopardy style is basically where there are multiple types of challenges. Let's say web
forensics, cryptography, steganography, networking related challenges where you have to uh, solve, decode those challenges or images. Like say, let's say steganography में क्या होता है? You basically get a image and they say nothing. Like कौन सा भी hint नहीं देते. Basically everything is in that image. You have to solve or get the data out of that image. So there are many techniques. We'll talk them further. But can you guys tell me if steganography can only be applied to you images और या फिर दूसरे किसी चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं? Yep, actually I'm repeating that only because this session is specifically for the people who weren't able to join the offline session. So yeah, can I get an answer from you? I want it to be really you know interactive. If you guys Yeah, just keep your like mic as we like as we had seen in the video, so they were deciphering some sort of data, some sort of useful data from different types of files. They were using images, they were even using audio files. So I think yeah, steganography can be used for different files, and it's okay. not limited to So images. yeah, so basically that. And steganography can be done on text files, images, videos, audios, and even like जो भी digitally store होता है. One guy said a sticker, and it can be possible because sticker is basically a JSON file, and within a JSON file, data can be hidden. So it can be done to anything. But normally, like for CTFs, web इस पे ही होता है, like text files, audio files, video files, and images. Actually, guys, RNJ अकेला ही बोल रहा है. I haven't gotten any inputs from others. If you could only speak, cause one way communication कभी काम नहीं करता. We have to make it two way, three way, or या फिर even everyone, if everyone speaks, it's better for you to learn. अभी तुम लोग अटेंड कर दोगे फिर like बाद में भूल जाओगे, फिर सोल्स्टिस में प्रॉब्लम होगा. It's better to communicate between. So can you guys please open your mics if I ask a question? Or it's really gonna be the boring old cybersecurity session. I don't want it to be like that. That's why we have an offline session. Offline session was so good. We were having so much interaction, and online is always like this. I don't like online sessions too. Yeah. You're audible. Okay, so please open your mics whenever I ask a question. Yes, yes, yes. So the jeopardy style, you got the jeopardy style, right? Mini hacking challenges. Basically एक image दे दी, नहीं तो वीडियो दे दी, you have to decode, और फिर वीडियो में कुछ hints रहेंगे तो वो ऑडियो को तुम लोग ने ये किया रहेगा मार्क की, लाइक स्टेगनोग्राफी ऑडियो में थोड़ी कर सकते हैं, वो थोड़ी दिखता है. बट इफ यू हैव वॉच द वीडियो नो, सो इस वीडियो में एक पार्ट था, द फर्स्ट ऑडियो ऑडियो का ये वहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे ये आ रहे थे नंबर्स व्हेन द ऑडियो वाज प्लेइंग. 3 म्यूजिकल ऑडियोज थे, उनमें से जो फर्स्ट था उसमें था, आई गेस. या so yeah, you can like review that back. But what were those numbers? Those number was just the frequency of each thing, or the frequency of the audio that's being played. So normally steganography challenges में अगर audio आया, you have to visualize that audio through an audio visualizer. But we are not gonna have it, so let's skip that. Attack and defense style CTF. This is basically what I do. You have to attack and server. Yeah, Aryan. Yeah, when we talk about visualizing an audio, is it similar to audio visualizers that we seen in equalizers? Yep, exactly same. But Oh, उसमें कुछ okay. कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं.
तो फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे करने के बाद कुछ सेटिंग चेंज करने के बाद यू कैन क्वाइट लिटरली सी द फ्लैग, लाइक लिटरली देखने में मिलता है कि फ्लैग curly braces inside that visualizer. Okay, cool. Yeah. So attack, defense, tell, CTF. Those are the CTF which are quite hard. Those are the CTF which I do, which in which you basically have to attack a server, exploit some vulnerabilities, get root or admin access to it. So our main goal is jeopardy self CTF. And also if you think कि ये CTF क्या है, मैं क्या ही करने वाला हूँ, etc etc, let me tell you, CTF are quite one of the ways to get into like big companies, MNCs and stuff. Why? Even Google, Microsoft, Facebook, every single one of the top 500 companies have kept an CTF to just like CTF में आओ freely खेलो, and the top participants got a chance to directly interview through the HOD, because the HOD knew कि those participants already had the skills, right? So CTFs are kind of the way, even in cybersecurity companies. If you interview for an cybersecurity company, they will quite literally give you an CTF. They will be like, hack this box, and your letter will be like a reviewed letter if you crack the box. So, CTFs are quite interesting and like important in cyberspace. Not only in cyberspace, but problem solving key skills आती है. You if you can read cryptic messages. If you have ever like हिंदी के सीरियल्स है क्या किसने, जिसमें हमेशा सास बहू को ताने मारती है. Yes, yes, yes. Uh-huh. यस. सो वो डायरेक्टली ताने मारती नहीं है, वो ऐसे पूरा घुमा के मारती है, बट दैट शिट हर्ट्स. लाइक बहू को हर्ट होता है. बेसिकली शी इज सेइंग समथिंग एल्स, बट इन सम अदर वर्ड्स. सो वही क्रिप्टिक मैसेज में क्या होता है, अगर घुमा के स्टोरी बता रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली द सेम. इन CTF वो बहुत होता है. सो लाइक इफ यू रीड समथिंग, एक कुछ तो टेक्स्ट दिख रहा है ड्यूरिंग द CTF, you're gonna have to question it, the three W's: what, why, and when. Why is that thing there? What is the thing? And when, of course, the time of the CTF, etc. Because even CTFs are even linked to timings and stuff. So that was the beginner's guide to like CTFing, and we'll move on to like our presentation. So steganography. Do you guys want to do a practical? Because इसमें मजा आता है. You will Sure. I'll share you guys some images. You'll have to share your screen. Nitin mat karo share, but at least perform the steps that I am doing. So practical experience आ जाएगा, soul size crack करने में बहुत easy रहेगा. Yes, yes. Okay. Good with it, Yes, everyone. yes. Yeah, एक दो Yeah. students से बोल रहे हैं यार. Come on, I need at least 10 plus people to say yes. 48 people है. Just say yes in chat so I can share the zip file with you all. Okay, great. At least we have some interaction now. So, wait, I actually don't know where Levi kept the file. Uh, do you guys have Discord? Yes, yes. No, Yes. quite few of you don't. So I'll just download the file from the Discord and send it here. So easy for you guys. Yeah. Wait a second.
Yeah. Yep. It's already shared, dude. Just check the general chat. उसके नीचे ऊपर से ऊपर थोड़ा scroll कर, you will get it. I'm just doing it for the people who don't use Discord on daily basis. I don't want to create an unnecessarily Discord खोलो, switch करो and stuff. I have you so download the file now, and if anyone's ready to share the screen, it will be great. Let's have some interaction क्योंकि ये वाला stuff तुम्हें actually soul size में use करना है. So it's not my problem if you couldn't solve the steganography part, because that's quite literally the first one. If you do it practically, yes, you're gonna have some chances. नहीं तो फिर of course first part तो पार ही कर लोगे यार. Downloaded? Yeah. Okay. Yes, yes. Okay. So I'll just show you how to do it. Okay. So if you have downloaded the file, you will have an compressed file. उसे तुम लोग को extract करना है. Extract करने के बाद you will have a files name का folder. Okay. Got it? Everyone's on the same page. Send some messages, dude, please. Or open your mics, please. Because, Yes, you yes, know, yes. interaction चाहिए, as I said. It's not fun if I am just doing talking. It's always that boring online cybersecurity ka lesson. I don't want it to be that. I want it to be practical. Uh Wait, I haven't used Mac in my lifetime, Advait. Maybe we can have a talk later. कौन सा तो binary रहेगा ही similar to Stegan. Okay, so has everyone downloaded the files ka folder? And don't worry, Yes. guys, you don't need laptop during the soul session. We have an whole lab allocated to you. उस लैब में आओ, tools already installed रहेंगे. You just have to crack the images you are gonna get, right? And अभी तो जो भी मैं इस सेशन में सिखाऊंगा, only that is gonna come. You just need some common sense and some a bit of curiosity to solve all of this. Okay, so if you have downloaded the file, you're gonna get a files ka zip, extract that zip, go into that directory. You're gonna see three images: Eve, metadata, and hexed. So do you guys know about metadata and hex values? And yeah, basically those two. Do you guys know? Like थोड़ा सा भी idea है कि what क्या है वो? Alpesh, Uh, Yeah. like there एक छोटा like ये था confusion था अभी. Uh-huh. If we are not able to have a laptop or a desktop set, तो हम ये सब सेम चीजें फोन के थ्रू कर सकते हैं. फोन के थ्रू वेबसाइट्स है. यप, यू कुड. बट फोन में तुम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, आई विल जस्ट सेंड द इमेजेस, एक्सट्रैक्टेड इमेजेस. सो फोन में ज्यादा इजी हो जाएगा तुम सबको. Cool, cool. Okay. Okay, so I'll have to share the website as well. Okay, we'll do it both ways. क्योंकि लैब में तो वेबसाइट रहेगा, सो यू नीड टू नो हाउ टू यूज दोज टूल्स. आई शो द कमांड लाइन वे एंड द वेबसाइट वे एज वेल. बट सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. फन रहेगा बट. Okay, so to metadata, hex and Eve, you cannot do one like एक challenge तुम लोग नहीं कर पाओगे, which is Eve वाला, but you could do the other twos. Yeah, so a metadata of an image is basically it's basically extra data, like एक image का extra data. Like say, let's say if you have wandered around in camera का app,
you might have seen a toggle to like save location of that photo wherever you take it, और फिर like say save the author name, नहीं तो फिर add device information to which it has taken. I hope. Oh shit. uh, can I just region my network sound? Okay, yeah, you can. So that's basically metadata, the extra information that is saved to an image when it is taken, like at the spot जब निकाली जाती है तभी. And hex is the basically data representation of an image. Got it? What's the difference between them? Hex is data representation. Basically hex का जो डेटा, जो इमेज का डेटा रहता है उसे रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म है. एंड मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा विच इज एक्स्ट्रा. लाइक अगर वो मेटा डेटा निकाल दूंगा ना मैं, तो भी इमेज दिखेगी, बट दैट डेटा इज सेव टू एन इमेज whenever you click it. So if you see एक और एक मेथड है. If I open an image, how you guys open an image is basically open in an image viewer, right? इमेज व्यूअर में देखते हो थोड़ा और एक मेथड है, जूम इन जूम आउट. अगर इसमें इसमें एक छोटी सी पिक्सल की लाइन भी हो सकती है फ्लैग को जूम आउट, मतलब थोड़ी बड़ी इमेज रहती है तो समटाइम्स व्हाट CTF organizers do, they make a smaller image and make it a bit big, so stretch हो जाता है. सो नॉर्मली विंडोज व्यूअर इमेज व्यूअर क्या करता है, उसको स्मॉलर फॉर्म में ही दिखाता है, बट जो स्ट्रेच पार्ट है वो उसमें कभी कभी फ्लैग छुपा देता है. सो इवन जस्ट एज छोटा करना इमेज कैन गेट योर फ्लैग. And if you want to see the actual data within those images, it's quite different. See, बहुत अलग है. It's not human readable. It's not even a sky. It's not readable to human mind. So yeah. But if you see, यहाँ पे मैंने ना सोर्स कोड में एक फ्लैग छुपाया है. That is basically this flag InfoSleuth. अभी तुम बोलोगे कि भाई मैं सोर्स कोड को ही खोल के ये कर सकता हूँ, बट बहुत टाइम ये क्या होता है सोर्स कोड में फाइल, अगर तुम लोग सोर्स कोड में रखोगे तो करप्ट हो जाता है. दैट्स हाउ यू एडिट हेक्स फाइल. सो टू यूज दोज टूल्स, जो XXD करके टूल है एंड EXF टूल है, which we are gonna install on a lab, and that lab is allocated for you guys to use during the whole Solstice event. So you're gonna like click on this path wala thing, type PowerShell, click on enter. It's gonna pop a wizard, basically a command line pop up. And now to use those tools, like जो tools यहाँ पे है, okay, wait, okay, shit. So यो ये जो tools है यहाँ पे EXF and XXD, you just have to type XXD and just type tab. Okay. अरे यार, XXD tab. Yeah. See, it auto completed it to ./xxd.exe. So you have chosen the image, but you have to image ka like you have chosen the tool. Sorry, not the image. You have chosen the tool, but you need to provide something to that tool ना. Input कुछ तो देना पड़ेगा. So you give an image to it. So the next after a space, the next will be HEXED. So an image as an input. If I click enter, see, बहुत रैंडम टेक्स्ट आ गया यार, मुझे कुछ नहीं समझ रहा. दिस इज बेसिकली हेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज. अभी तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे ये JPG इमेज है, इसलिए यहाँ पे एक हेडर में आया JFIF. अगर ये PNG होती ना तो यहाँ पे PNG एकदम यहाँ पे स्टार्टिंग में रहता, स्टार्टिंग के 3 बिट्स, और ये सब बिट्स खाली रहते. बट जे जे JPG इमेजेस का हेडर अलग होता है, विच इज लाइक यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, बीच में JFIF. एंड देन इफ यू सी, यहाँ पे एक फ्लैग है, फ्लैग इन्फोस्लियत. सो ये फ्लैग कहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन क्वाइट लिटरली इन मिडल ऑफ द होल थिंग. सो
If you want to do this on a website, there's a website too. Actually, Hex, yeah. So the website name is Hex It. I'll send it on the TechShala general chat as well and send it here as well. So if you see अभी के लिए कुछ नहीं है because हमने actual data image ही load नहीं किया यार क्या आएगा. We'll open a file, show all files, and just go to download files, and you have to choose the file you wanna see in the hex representation. Open the file, it will load the data. If you can see, yes, it has loaded the data. If you want to read, you can just read it throughout the data and stuff, but our flag is right here, flag InfoSleuth. Yeah, so that's how you know ये hex representation का review है. Hex representation analysis बोलते हैं इसे. The other one which I told you using a notepad is basically source code analysis but of an image. So image का source code भी होता है यार. Okay, so hex dot image इस पे तुम लोग जो मोबाइल पे वो सब इधर ट्राई कर सकते हैं. Okay, Arinjan and Isha, Rahul. Yes. Yeah, Okay. okay, Yes, yes. And okay. Alpesh, hello. Yeah, yeah. जब भी हम लोग ये मेटा डेटा लाइक सब स्टोर करते हैं, अगर हम लोग क्लियर मेटा डेटा कर देंगे तो उसका मेटा डेटा फिर से आ पाएगा क्या? नहीं, इफ यू क्लियर अ मेटाडाटा ऑफ एन इमेज वो वापस के कभी भी नहीं आएगा अनलेस ओके. यू स्पेसिफिकली ऐड सम टू इट. Oh, okay, okay. Got it. Could I get a thumbs up if you have understood the assignment till here? Yeah, I had one doubt. Yes, yes. Yeah, So hex just put a basically. wait. Okay. Just put a thumbs up in the chat or else I'm not gonna proceed with it. Chat में डालो, not the reaction. Okay, Arin. I was telling ki like hex is just a form of data representation and it is not a file type, right? Nope. Yep. True. Okay. So डेटा को रिप्रेजेंट करना और द एक्चुअल डेटा इज क्वाइट डिफरेंट बोथ. बिकॉज तूने मैंने अभी देखा लाइक मैंने ओपन नोटपैड में खोला उसका एक्चुअल डेटा पूरा अलग है. सी इट्स Hmm. इट्स रैंडम टेक्स्ट नहीं है. इट मेक सेंस टू द कंप्यूटर. तो बट ह्यूमंस के लिए तो रैंडम टेक्स्ट है यार. या सो Okay. हेक्स इज इन अ नटशेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, तो हेक्स ये इज नॉट अ सोर्स. रिप्रेजेंटेशन को लाइक कहीं ना कहीं जस्ट टू लाइक रिलेट थिंग्स कि यार अभी मैंने ना कोई एक नंबर स्टोर किया है एक वेरिएबल में और ये नंबर बाइनरी में कंप्यूटर पढ़ता है, तो ये बाइनरी में बेसिकली एक डेटा रिप्रेजेंटेशन हुआ, सो हेक्स भी बाइनरी की तरह हुआ, राइट? नो, इट्स नॉट द सेम. बाइनरी इमेज व्यूअर करता. इफ यू नहीं सी नहीं, मैं लाइक खाली डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि नो नो 16 नो को नो अगर नो बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होगा, तो नो वो फॉर्म सी में एक सेकंड. देख सकते let me हो। explain ओके। let me explain whenever an image is made, it's stored in a different file type. like let's say अगर तू सी का प्रोग्राम कंपाइल कर रहा है वो बाइट कोड में जाता है, राइट. हम्म। इमेज इज बेसिकली आउटपुट ऑफ एन कंपाइलर. अभी कंपाइलर क्या हुआ, फोटोशॉप. फोटोशॉप इज एन एडिटर बट एडिट भी करता है और वो एक्सपोर्ट भी करता है, कंपाइल भी करता है टू इमेजेस. बट इन आर लैंग्वेज अपने को ये कभी किसने बताया नहीं है. तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है. बट एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब वो डेटा लिख रहा है ना. इट्स क्वाइट लिटरली राइटिंग द डेटा टू बी एबल टू बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर या फिर द इमेज व्यूअर. अभी इमेज व्यूअर क्या करता है, इट बेसिकली जो डेटा लिखा है उसको रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ सीजीआर. लाइक सीजीआर में कैसे डॉट्स रहते हैं, लाइक अपने मॉनिटर में पिक्सेल्स रहते हैं. in terms of that it basically represents that. Got it? तो मतलब ये डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए भी है एंड डेटा व्यूइंग के लिए भी है। यप. अगर मैंने बीच में आप पे काफी भी डेटा ऐड किया ना, द हाँ। इमेज इज मेरी जो कार की इमेज है ना वो खराब हो जाएगी. वाई?
करप्ट होगा ना बिकॉज फाइल। हाँ, बिकॉज करप्ट नहीं होगा। अगर मैं उसको ही वही डेटा वापस निकाल दूंगा ना, तो वही करप्टेड फाइल इट विल स्टार्ट शोइंग द होल थिंग अगेन। व्हाई? क्योंकि मैंने एक सीरीज में बीच में ही कौन सा भी रैंडम स्टफ डाल दिया, इमेज खराब हो गई। इमेज में क्या ओके। आगे का इमेज तो खराब हो गया ना, तो वो दिखेगा ही नहीं, हम्म। सो करप्ट हो गया इन अ नटशेल। So if I want to like add and flag in between of an image, I will have to add dummy data. What is dummy data? Basically 0 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 to the whole line. अभी डमी डेटा के बीच में क्या होता है? इफ आई ऐड 0 0 0 0 इन अ सीरीज, तो सीरीज में उसको कंपाइलर को समझ आता है कि दिस इज बेसिकली डमी डेटा, उसके बीच में का कुछ रीड नहीं करना। इफ यू सी इमेज के मिडल वाले पार्ट में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारा है, बट एंड एंड में है ना, देख, कुछ नहीं है। बहुत सारा 0 0 0 0 0 0 0 है, बट बीच में ही कुछ कुछ है। दैट इज बेसिकली डमी डेटा। सो दैट्स अबाउट हेक्स। थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेट्स मूव टू अनदर वन विच इज मेटा डेटा। अभी मेटा डेटा के लिए ये एक SAF का तो खुद का ऑनलाइन टूल है। यहाँ पे फाइल चूज कर लो, शो ऑल फाइल्स, एंड यू हैव टू गो इनसाइड योर फाइल्स फोल्डर, एंड यहाँ पे मेटा डेटा वाला फाइल अपलोड कर दो, अपलोड फाइल, एंड यू बेसिकली गेट द होल स्टफ। सो अभी इसमें क्या क्या डेटा है, कितने मेगापिक्सल से लिया गया था ये, इमेज की साइज क्या है, बिट्स को लाइक बेसिकली कलर रिलेटेड, इमेज कौन सा कलर मैट्रिक्स यूज हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर डिवाइस का है, ये देखो एज आई सेड, अभी ये वाली फाइल ना, एक्चुअली इट इज नॉट मेड फ्रॉम एन डिवाइस, लाइक फोटो थोड़ी खींचा है, इट्स क्वाइट लिटरली जनरेटेड फ्रॉम ब्लेंडर। सो ऑफ कोर्स डिवाइस का डेटा नहीं रहेगा उसमें। वी डू नॉट एक्सपेक्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरर, नॉट इन डिवाइस मॉडल एंड स्टफ, बट इफ यू टेक एन रियल इमेज उसमें रहेगा। कभी घर पे अभी अब भी ट्राई कर लो, चाहिए तो बैठे हो, किसका भी फोटो ले लो, उसको इस पे अपलोड कर दो, वहाँ पे तुम्हारे डिवाइस का डेटा रहेगा। फिर XMP टूल किट, बेसिकली कौन से टूल से हम लोग देख रहे हैं वो सब आ रहा है। फिर यहाँ पे क्रिएटर में मैंने खुद का नाम ऐड कर दिया, द ग्रेटेस्ट हैकर एवर, एक्सेट्रा, जस्ट जो, या सो। और एक में कमेंट में मैंने फ्लैग ऐड किया यहाँ पे, वापस द फ्लैग इज इन्फोस्लेथ, कीप इन नोट दैट द फ्लैग इज रिपीटेड, राइट? So this is the second way to view the flag. Got it, everyone? Yes, yes, got it. यस। Yeah. So now third way, stag hide. अभी स्टेग हाइड के लिए तुम लोग को स्टेग हाइड में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर और एक कमांड है दैट इज बेसिकली CD चेंज डायरेक्टरी। अभी स्टेग हाइड डाल दो, स्टेग कर दो, लाइक STG, टैब दबा दो, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा फाइल को। एंटर। नाउ यू हैव चेंज द डायरेक्टरी, पहले डायरेक्टरी थी सिर्फ फाइल्स तक, अभी फाइल्स के अंदर स्टेगाइड का फोल्डर है। स्टेगाइड इज नॉट अ कंप्लीट वन exe टूल, इट रिक्वायर्स सम लाइब्रेरीज। सो उसके पर्टिकुलर फाइल में तुम लोग को खुद की जो इनक्रिप्टेड इमेज है उसको पेस्ट करके उसमें यूज करना पड़ेगा। गुड एट इट? ओके ओके। अल्पेश, आई गेस कुछ डाउट है खुश पुलिंग को। या Excuse me. या Uh, खुश। can you just share the link of the metadata website अरे in the हाँ, chat? ओके 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 वर्क्स। I'll share it on the general chat as well. Okay. या सो दो मेथड्स हो गए। वी हैव टू क्रैक, नहीं अभी थर्ड मेथड। Stagite is basically a tool which is used to hide stuff inside an image, but it is also used to decode it. But whenever you use Stagite now, you need a passphrase or a password to encode or decode it.
So if you have seen the last few flags, you're gonna see some kind of familiarity between that. InfoSleuth. Yeah, exactly. So if you do dot slash steg height, nahi, yeah, stg stegheight.exe, that's how you select the tool. And then what if you need some help about the tool? Like, of course, every tool has a user manual, but since these are Linux tools, these have different kind of manuals. You have to open them using command line only. This is basically hyphen hyphen help. See, बहुत कुछ टाइप करके बाहर आ गया, but it's basically what the tool is made for and what solutions can it provide to you. If you see embed hyphen hyphen embed data, data embedding के लिए यूज होता है. फिर extract data extract करने के लिए, फिर info display information about cover और stack of file. अभी मैंने डाला समझ stack guide info, फिर शू मैंने यहाँ पे जो इमेज लिया वो शू कर गया. सी shoe.jpg format is jpeg and the capacity like कितनी बड़ी फाइल है. Try to get more information about the embedded data. Yes, अभी पासवर्ड मांगेगा. इमेज के बारे में डेटा नहीं मांगेगा पासवर्ड, बट इमेज के अंदर कुछ है, अगर उसे डिकोड करना है तो ऑफ कोर्स इट्स गोना नीड अ पासवर्ड. So if you've seen similarity between the few uh, the two flags, tell me what could be the passphrase. InfoSleuth. InfoSleuth. Yep, exactly. So but you got to remember कि हर एक like कभी भी in whenever you are solving a CTF or using Linux or using those tools, you have to make sure कि you are using the right casing. अभी यहाँ पे इन्फोस्लिथ में I कैपिटल है, N स्मॉल है, F स्मॉल, O स्मॉल, S बड़ा है. So I'll get the data, input it as info hyphen SLEUTH. बट मैंने तो कुछ डाला ही नहीं, मैंने टाइप ही नहीं किया, दिखा ही नहीं. वाई? whenever you enter a pin inside a Security bank. purpose. Yeah, exactly. Whenever you enter a pin in a bank, बैंक के बैंक नहीं, एटीएम के डिस्प्ले पे थोड़ी ना पिन दिखता है, वहां पे तो स्टार दिखता है. सो द सेम कॉन्सेप्ट हियर. तुम लोग का पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में किसी को भी ना दिख पाए अदर देन यू, वहां पे पासवर्ड दिखता नहीं है बट टाइप होता है. सो इफ आई क्लिक एंटर नाउ, सी there's an embedded file called a.txt inside that particular file stack hide. And the file like a.txt की जो file है उसकी size है 50 bytes and it's encrypted as something. ये मुझे भी नहीं पता है. Compressed है, yes, compression किया है. So how do you extract that file? Just use hyphen hyphen help on your device and tell me. देख वहाँ पे ऑप्शंस भी है बहुत सारे. यू हैव टू टेल मी कि हाउ टू डू इट, व्हाट द कमांड विल बी टू डू इट. यू कैन टेक योर टाइम, 5 minutes. ओके, गुड एवरीवन. हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. एक्सट्रैक्ट, यप यप. बट एक्सट्रैक्ट तो हाँ. एक्सट्रैक्ट ही करेगा ना, वो डायरेक्टली तुझे इस पे दिखा देगा, बट तुझे इनपुट भी देना है फाइल को. सो देयर इज अनदर हाइफन हाइफन का फ्लैग बोलते हैं उसको Hyphen बेसिकली. SS. ट्रू. हाइफन एक्सेप्ट. या सो यहाँ पे स्टेगो फाइल करके एक फ्लैग है. सिलेक्ट स्टेगो फाइल. सो व्हाट द कमांड विल बी इज बेसिकली stg steghide.exe. अभी यहाँ पे दोनों वेज से यूज कर सकता हूँ मैं एक्सट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पे दोनों वेज दिया. एक्सट्रैक्ट नॉर्मली भी यूज कर सकता हूँ, नहीं तो फिर हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट भी यूज करता हूँ. बट EXTRACT मैंने नॉर्मल वाला यूज किया. एक्सट्रैक्ट हाइफन एफ, अभी मुझे एस एफ यूज ही करना है. वाई? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ही दिया है कि हाइफन एस एफ यूज करो या फिर हाइफन हाइफन स्टेगो फाइल यूज करो. सो हाइफन एस एफ दिया मैंने. अभी इनपुट मैंने टूल को सिलेक्ट कर लिया, टूल को किस वे में वर्क करना है वो भी सिलेक्ट कर दिया. अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है?
File name. Yep. You gotta give some input to the file, no? To the tool to extract the data. अगर input ही नहीं है तो वो extract क्या करेगा? See, SF argument must be followed by the stego file name. Error दे देगा. तो अभी मैंने ओके सी यहाँ पे शू डॉट जेपीजी ये दे दिया, इनपुट दे दिया एंड क्लिक एंटर एंड नाउ द पासवर्ड एंटर करूंगा INFO-SLEUTH एंटर. Wrote extracted data to a.txt. Now I don't recommend doing this, but you can directly just do ./a.txt या फिर खुल जाएगा. But बहुत टाइम डेटा अलग होता है, तो you just have to like go normal, अपना normal way कर लो. You just go in the file path, steg height में जाके a.txt को खोलो, मिल जाएगा. अभी flag भी मिल गया. We have completed the steganography module. Let's clap for ourselves. Yeah, so those were the three methods. Can anyone revise those methods to me? Like at least list the names. तो पहले तो हेक्स सेट करना था, लाइक हेक्स सेट Aryan, का एक Aryan, तरीका Aryan, था। Aryan. Let others have some chance, or they're just राइट। gonna अरे stay quiet. एक एक्चुअली एक डाउट था, वो लास्ट कमांड क्या So था टू ओपन द फाइल? No, you're not opening the file. You're extracting the file inside the image file. राइट, So the बट command देन is, द फ्लैग इज देन बीइंग स्टोर्ड इन a डॉट txt, राइट? तो हाउ डू yeah, यू ओपन दैट a डॉट txt जिसमें रूटिंग का कुछ आ रहा था ना? रूटिंग का नहीं है वो मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे a.txt की जगह a.zip भी हो सकता है. अभी तुम लोग को zip को एक्सट्रैक्ट भी करना हो सकता है, फिर वापस वो एरर आएगा. बट मुझे पता था कि वो txt है, वो मेरे नोटपैड में खुलेगा, इसलिए मैंने a.txt कर दिया. ओके सो ओके, एंटर, मेरा txt में खुल गया. या ठीक someone है। else was saying those names. first one was XXD, या नो, and the वो तो second फाइल का one नेम हुआ ना, was वो तो फाइल का नेम हुआ. uh, But I want the name of yes, the method I showed you. the HEX first one basically. was hexed, Yeah, and the second one was like metadata, yeah. Basically metadata review and the करना. third one was and the Basically third one was using extracting the Steguide, extracting the extra data inside an steganographed image. Right? yeah, Yeah. yeah. Okay. So steganography का And module complete हो गया. Good. So we'll move on. Can I get a thumbs up from everyone? समझा है इधर तक, कुछ तो समझा. इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे रात को कितने भी बजे मैसेज करो, मैं ऑनलाइन रहता हूँ. ये तो कभी भी मैसेज करो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. कैन आई गेट अ थम्स अप फ्रॉम एवरीवन ऑन चैट? या सुजा, यू हैव डाउट? नो डाउट्स? सबको समझा सब? Yes, yes. And Alpesh, can you वो सब commands एक बार step wise दे सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, वो बाद में मैं चीट शीट तो शेयर करने ही वाला हूँ ना, तो चीट शीट में है. Okay, 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 got it. ओके. Yep. So we have kind of learned steganography, but okay, again, this is not actual steganography. ये actual CTF level की steganography नहीं है. ये बहुत basic है. If you wanna learn, I'll provide you some resources. एडवांस लेवल में बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है वो. मैंने रो दिया था एक CTF चैलेंज में सॉल्व करते करते, हो ही नहीं रहा था सॉल्व, हो ही नहीं रहा था. But it was so frustrating, but yet the event yielded me something at the end. So yeah, we have completed the steganography part, and this is again text steganography. So can anyone read the whole stuff for me? Wait, no, no, no.
पूरा Stack crack. पैराग्राफ रीड। पैरे हाँ, What? स्टैक क्रैक, यस, बट वो तो मैंने मीटिंग ऑफलाइन I मीट में guess बताया था। Offline Alpesh attending Ishwar camp. Rahul. Wait. Just read the whole paragraph. Read the whole paragraph. Okay. Expectations, most of the time it fails. The thing as we see is not as it is. The real truth is always hidden behind the mask that lies. Be smart, crack the mask to survive, or get cracked by the mask. Choice is yours. See you soon. अभी अभी यहाँ पे tell me what's different in the paragraph. And, हाँ. The caps. capital letters in particular words. Yep. The casing in particular words. Also और दो तीन है. Tell me those two. At least one Three बता दो. dots. One. Yeah. Even the dots play a vital role because those can indicate something. उसे dot and dot को अलग एक ये बोलते हैं, but we are not including that. फिर एक white spaces का भी आता है, अगर वहाँ पे कौन से word में if you see double white space रहेगा, नहीं तो फिर लेट्स टेक एक्सपेक्टेशंस वर्ड लिया मैंने, ई को निकाल दिया, व्हाइट स्पेस डाल दिया, टी को निकाल दिया, व्हाइट स्पेस डाल दिया, आई को निकाल दिया, व्हाइट स्पेस डाल दिया। यू हैव टू गेस द वर्ड ना कि कौन सा वर्ड रहेगा, वर्डल हो गया वो बेसिकली, राइट। सो वो भी दिस इज अनदर मेथड, बट यहाँ पे इफ यू गो वन बाय वन, लेट्स गो वन बाय वन, ओके। जस्ट टेल मी कि एक के बाद एक क्या आता है, कौन सा बड़ा वर्ड आ रहा है लाइक अपर केसिंग वाला। पहले तो ऐसा आया, फिर बाद S. में T, T, टी आया, ई आया, E. T, J, G. सी आया, या अभी वहां पे And पूरे लाइन में तो पूरा Crack. क्रैक ही आ रहा है, तो क्रैक। हाँ. और फिर अभी E Crack. R भी है. E. E. या R. ई आर। अभी Yes. व्हाट डू यू थिंक स्टेक क्रैकर इज? एक क्विक गूगल करो, गो ऑन गूगल एंड जस्ट गूगल स्टेक क्रैकर एंड टेल मी द रिजल्ट्स, ओके। अल्पेश, क्रैक के पहले वाला जो स्मार्ट का कैपिटल एस है वो नहीं काउंट किया? नहीं, हाँ वो भी करना है, एस, बेसिकली एस, स्टेग्स क्रैकर। बट वो ऐसे भी डाल भी सकते हैं, लाइक स्टेक क्रैकर एक एक्चुअल टूल है जो ब्रूट फोर्स के लिए यूज होता है। लाइक अभी पासवर्ड के लिए मांगा ना फाइल ने, तो अपन क्या कर सकते हैं, हजारों पासवर्ड डाल सकते हैं उसको ब्रूट फोर्स करने। वी आर जस्ट गेसिंग द पासवर्ड, ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है। तो वो वर्ड लिस्ट पहले से आती है बनी हुई, कॉमन पासवर्ड्स वाली, वो होता है। सो बेसिकली स्टेक क्रैकर यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि ये ठाकुर कॉलेज में एक सीटीएफ था रिसेंटली, आई पार्टिसिपेटेड इन इट। ये उधर का ही है, लाइक इट्स अ एग्जांपल फ्रॉम देयर। उसमें चार मशीन्स थे, वी हैड टू हैक 4 मशीन्स। उसमें मशीन के अंदर आई गॉट नॉर्मल यूजर राइट्स का अकाउंट, लाइक मैंने हैक किया, मुझे आई गॉट यूजर लेवल का अकाउंट, लाइक नॉर्मल यूजर। एडमिन के लिए मुझे ट्राई करना था, सो आई वाज जस्ट एन्यूमरेटिंग द वर्ल मशीन, लाइक मशीन को ढूंढ रहा था कि कुछ है कि नहीं मेरे प्रिविलेज को रूट लेवल तक लेके जाने। तो यहाँ वहाँ पे ये एनकोडेड मैसेज छुपा हुआ था, तो इसको पढ़ के स्टेक क्रैक करता, और एक इमेज पड़ी थी एक रैंडम डायरेक्टरी में। सो यू गॉट द आइडिया, एक इमेज पड़ी है, स्टेक क्रैकर यूज करके उसे क्रैक करना है, उसमें पासवर्ड था, पासवर्ड यूज किया, मुझे एडमिन एक्सेस मिल गया। इट वाज इजी। यू गॉट द गेस्ट एवरीवन, कि लाइक कैसे हाउ टू कनेक्ट दोज डॉट्स एंड स्टफ। Yes. आई लाइक Yes. सम Yes. इनपुट फ्रॉम अदर्स टू। या सी साइक्लोन, हजारों टूल्स है मार्केट में, हजारों टूल्स है, बट यू हैव टू यूज सम स्पेसिफिक वन फॉर स्पेसिफिक थिंग। स्टेगनोग्राफी में अभी क्या हो सकता है पता है, बहुत, ये तो बेसिक लेवल का है जो मैंने खेला है ना, लाइक जो मैं खेलता हूँ, नहीं तो फिर जो आता है मेरे को, दैट इज क्वाइट लिटरली टू हार्ड टू एक्सप्लेन। अगर तुझे लिटरली एक
ये क्या बोलते हैं उसको, करप्टेड फाइल दी जाएगी एंड दे विल जस्ट से कि दे विल से नथिंग, उसके अंदर फ्लैग है ढूंढो। अभी वो फाइल को अपने को करप्टेड है, उसमें से ये सब करके तो डेटा निकलेगा नहीं। पहले मुझे डेटा को फिक्स करना है, तो वो उस लेवल का भी सीटीएफ होता है। हजारों टूल्स है, वी आई चूज टेग हाइड बिकॉज टेग हाइड बहुत फेमस है, विंडोज के लिए भी अवेलेबल है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You can use stack hide if you want. Anyways, we'll continue with the session. अभी we have completed the OSI steganography वाला one. I showed you three example of image steganography and one of text वाला. Now OSINT. OSINT is basically open source intelligence. What do you get a guest from it? सिर्फ नाम सुन के क्या लगता है? Tell me in the chats or open your mics first. बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया यार अल्पेश ने, कुछ समझा नहीं, ऐसा हुआ? Can you repeat the word once again? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मल्टीपल टूल्स रहेगा जो एक्सेस कर सकता है। नो, सी द वर्ड itself quite gives you information. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। उसके अंदर लाइक हर एक टाइप की रिसोर्सेस रहेगी तो उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं लाइक दैट। नो 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 नो, अभी साइक्लोन ने बराबर बोला ओपनली अवेलेबल, ओपन सोर्स उसके आगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज बेसिकली यूजिंग योर ओन इंटेल टू लाइक फाइंड स्टफ। अभी तुम बोलोगे भाई अल्पेश क्या सिखा रहा है हमें, हम लोग को गूगल सर्च करना आता है, बट यू कैन यू स्टॉक अ पर्सन लाइक उसका पूरा। अभी अभी एक टारगेट है, टारगेट का नेम मैविज अरिज्म है, ये अगेन ठाकुर कॉलेज में का है, सो यू नो ही इज नॉट अ रियल पर्सन, but we'll find some information on it. Everyone has Facebook and LinkedIn, I guess, logged into their PCs or mobiles, right? yes yes right. Yes. Yeah. So I just want you to Google about this person. दो मेजर sites आएंगे. I want you to tell. I want you guys to tell me the names of those sites. Go quick. And name is on your screen, anyways. MAVIHSARHSIM. It's quite fun activity. Everyone should do it. और ये थोड़ा सा हेल्प भी करेगा तुम लोग को, ये सॉल्व ऐसा वाला एक्टिविटी आने वाला है। क्वाइट अ हिंट देना नहीं था बट दे दिया मैंने गलती से। सो या जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च अबाउट दिस गाय। Yes, it is on LinkedIn, Facebook. Wish. Yes, only या this platform. या जस्ट टाइप इट इन द चैट। सब लोग लाइक एटलीस्ट एक थम्स अप कर दो कि तुम्हें दो साइट्स मिले मेजर वाले, लाइक लिंक्डइन एंड हिज फेसबुक अकाउंट। उसका नेम मैं ये कर देता हूँ, चैट में लिख देता हूँ, MAVIHSARHISM। Let me confirm. ARHSIM. MAVIHSIM. Yeah. So now you can just copy paste it. इसको शिवम स्पेल कर रहा है। हाँ, बुरान क्या? ओके, सो सबको एटलीस्ट लाइक कुछ लोगों को दो उसकी साइट्स मिली। आई विल डू इट। ओके, MAVIHSARHISM। ओके, Mavis, okay. हेलो। Yeah, you're audible. Yeah, someone just said hello. You're audible. अरे बाय एनी चांस इज इट शिवम मिश्रा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। it's ओके नहीं 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 नहीं, ठीक है। he is not a real person. Just एक प्रोफाइल क्रिएट की गई है अभी।
या सो यू गॉट अ फेसबुक, यू गॉट लिंक्डइन, मेजर साइट्स के लिए अपन जाएंगे। लिंक्डइन पे और अलग लोग हैं, माय फर्स्ट नेम रॉक्स, नहीं ये नहीं है भाई, ये शिवम मिश्रा नहीं है। ये यूट्यूब चैनल भी नहीं है, वो बहुत फालतू के फालतू ही आते हैं। बट मेजरली हमें सिर्फ लिंक्डइन और फेसबुक पे ध्यान रखना है अभी। दिस वाज क्वाइट अ चैलेंज, मुझे एक सर्वर हैक करना था, उस सर्वर का एडमिन ये बनना था। सर्वर पे एसएसएच मतलब बेसिकली रिमोट एक्सेस चालू था, मुझे उस पे ब्रूट फोर्स करना था पासवर्ड से, और मुझे इसका पासवर्ड बनाना था। व्हाट आई डिड, कैन यू सी हिज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम? यस। व्हाट्स द फर्स्ट नेम? यस यस व्हाट्स द फर्स्ट नेम? माविस। व्हाट्स द लास्ट नेम? आरसिम। ओके, उसके नीचे तुम लोग को और थोड़ी इंफॉर्मेशन आ रही रहेगी। वेट इज शिवम मिश्रा नहीं नहीं नहीं, शिवम मिश्रा नहीं है, एंड अर्शित उल्टा बैकग्राउंड नॉइस आ उसका रही है। शिवम मिश्रा पे मत जाओ, मैंने सिर्फ 2 लिंक भेजी है। ओके वेट, शिवम मिश्रा पे मत जाओ, नहीं नहीं आई अल्पेश, उसका लिंक से। अगर उल्टा करेंगे तो अरे नहीं तो नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। ओके ओके। वो बंदा एक्चुअल बंदा रहेगा। ये मेरा भी हुआ था शिवम मिश्रा का, मैंने बहुत अराउंड 2 घंटे उस पर वेस्ट किए थे। बेसिकली हमें 2 प्रोफाइल्स मिले, फेसबुक एंड लिंक्डइन। अभी और एक तुम लोग को मिलना चाहिए, कुछ तो लिंक्डइन पे उसने और एक खुद के बारे में लिंक हिंट डाली है। ही वर्क्स एट फील सेफ फील एंड सेफ। ही इज अ सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एज आई सेड आई हैड टू हैक अ मशीन, उसका एडमिन था मैविस अरिज्म, राइट? He works at यस यस network. राइट। He works as network administrator at a system. Basically वो अभी देखते his posts like LinkedIn पे जो पोस्ट किया उसके interests and other like stuff. So if you read this post पूरी पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे कि he is basically a coder. हैकेथॉन्स जाता है बंदा, हैकेथॉन्स enjoy करता है, etc etc etc. He's a coder. Now keep in mind, coder is a keyword. Keep the word coder in your minds. So he has reposted someone else post. अभी तुम लोग ये पढ़ोगे ना, you will literally feel कि बंदा is hating his company. ओके, सो ही वांट्स टू स्विच, अपन ऐसा अज्यूम कर लेंगे, ओपन सोर्स OSINT है तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटी। ही वांट्स टू स्विच हिज कंपनीज, 2 3 मिल गया। अभी फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं, इसका निकनेम क्या है, मुझे दिख रहा है लूसीफर, यस। लूसीफर। नाउ अनदर हिंट, लूसीफर उसका निकनेम है। अभी ये बंदा सिंगल है, ये मैंने सबसे पहले देखा ऑनेस्टली। सो इज ऑल्सो, उसने इसमें भी डाला है एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंगल है बंदा। अभी अबाउट में जाएंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। नो प्लेसेस टू शो, नो स्कूल, सिंगल एक्सेट्रा, वर्क एंड एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्लेसेस लिव, नो प्लेसेस, कॉन्टेक्ट बेसिक्स। यहाँ पे 2005 मिला, बर्थडे ईयर 2005, मार्क इट डाउन। ओके एंड फैमिली में कुछ नहीं मिला, डिटेल्स अपन में। एंड गाइस, इज इट बोरिंग, अ बिट बोरिंग सेशन? क्योंकि मैं अगर डिटेल में नहीं समझाऊंगा ना, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दो स्टफ इन सोल्स्टिस। नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। आई गेस इट इज काइंड ऑफ बोलिंग। 10 पीपल छोड़ के निकल गए, छोड़ दो, दे डोंट वांट विन एनीवेज। बिटवीन अगर जीतना है तो कैश प्राइज है। इन डॉलर्स हाँ। नहीं, छोड़ दे, डोंट बिलीव हर्षित। सो बेसिकली ही ओके उसके कुछ और कीवर्ड्स मिल गए। ड्रैगन बॉल जेनोवर्स 2, ही लाइक्स दैट पर्टिकुलर गेम। सो और एक कीवर्ड मिल गया, व्हाट आर हिज इंटरेस्ट।
सो ये वाला भी एक वर्ड मिल गया. ही लाइक्स एनीमे, ही लाइक्स एरन योग, एरन येगर. एओटी पसंद है बंदे को, नेचर पसंद है, गोकू पसंद है. वी गॉट अ फ्यू मोर कीवर्ड्स. अभी ये सब डेटा मैंने मैंने ये सब डेटा एक कप करके टूल है, CUPP करके, पाइथन का टूल है. इसको मैंने पासवर्ड प्रोफाइल, कॉमन यूजर प्रोफाइल, पासवर्ड प्रोफाइल है. इसको मैंने ये सब डेटा फीड किया, मेरी वर्ड लिस्ट बनी 17,000 पासवर्ड्स की. मैंने ब्रूट फोर्स किया SSH. इजीली आई गॉट इनटू द नेटवर्क. मैंने क्या किया, OSINT किया, सिर्फ सिर्फ OSINT किया. और या वी मिस्ड अ पॉइंट, यहाँ पे इसका बर्थडे की ये मिली, बट वी डिडंट गॉट हिज बर्थडे का मंथ एंड डे. वो मुझे लिंक्डइन से मिला था, आई डोंट नो कि वो कहाँ पे था. बट हिज बर्थडे डेट इज 7th 7th February. या वो कहाँ से तो मिला था, मैंने उसके बारे में लाइक बहुत ढूंढा था. कोई बर्थडे पोस्ट रहा होगा, अबाउट दिस प्रोफाइल नहीं, पता बर्थडे नहीं यार. मैसेजेस, बर्थडे मैसेज आया होगा, किसी और ने मैसेज विश किया होगा उसको, मैं भूल उसके गया फॉलोवर्स प्रोबेबली. से। नहीं, मैं हाँ प्रोबेबली हाँ, भूल ऐसा गया. नोटिफिकेशंस आते हैं। नहीं, मैं प्रोबेबली भूल गया क्योंकि वो इस पे तो नहीं था. फेसबुक पे मुझे बहुत कम इंफॉर्मेशन मिली थी, लिंक्डइन पे ही था वो. लेट्स मूव ऑन. मुझे उसका पासवर्ड मिल गया, आई गॉट इनटू द नेटवर्क. दैट्स वेयर OSINT कम्स इन प्लेस. यू शुड नो व्हाट यू आर रीडिंग एंड हाउ इज इट गोना हेल्प यू. That's the whole point. And sorry if this was boring. Next, now this is interesting. Everyone open your Chrome browser and उस पे एक साइबर शेफ करके वेबसाइट है, उसको खोलो. If you can read this, can you read? Can anyone read this? सिर्फ ये फर्स्ट वाला, Can बाकी का you बाद में देखेंगे. capture the F? See, Can you you capture the can flag? you Flag can flag. read it. Like वो थोड़ा सा changes किए, but you are able to read it. 4 को ए को 4 कर दिया, O को 0 कर दिया, फिर T को 7 कर दिया, E को 3 कर दिया, 2 को ये कर दिया, CAPTUR. आर कभी कभी लोग 2 जैसा लिखते हैं, फिर बाद में एक स्लैश मारते कनेक्टिंग. तो ये भी एक एनकोडिंग मेथड हो गई. कैन यू कैप्चर द फ्लैग, ये हो गया एक बेसिक वाला, सबसे बेसिक. डू नो व्हाट दिस स्ट्रिंग इज? डज एनीवन नो व्हाट दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग इज? Binary. बाइनरी। Oh, nice. Binary. Okay, so how can I decode binary? अगर मैंने यहाँ पे साइबर शेफ खोला, Decoder what से should I do? What should I do? बाइनरी है, मेरे को पता है, मैं इनपुट में बाइनरी दूंगा. बट लेट्स से मैं साइबर शेफ को इंट्रोडक्ट करा देता हूँ. साइबर शेफ इज बेसिकली अ वेबसाइट विच इज यूज्ड इन CTF अलॉट. यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, पोशंस बनाते हैं, अपना जादू चलाते हैं यहाँ पे. बेसिकली वी मेक सम स्ट्रिंग्स विच आर नॉन रीडेबल टू ह्यूमंस. तो जो नॉन रीडेबल है उसको डिकोड करते हैं. अपने को पता है बाइनरी है, तो व्हाट आई विल डू, मैंने सर्च किया यहाँ पे बाइनरी. बट यहाँ पे मैं बहुत डम था, लाइक पहले जब मैं सीख रहा था ये सब, मैं बहुत डम था. मैं 1 घंटा ऐसे ही टाइम पास किया, 2 बाइनरी ऐड कर दी मैंने. अब मेरे को पता नहीं था, मैं साइबर शेफ कौन सा भी यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखा था. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने चालू कर दिया. आई जस्ट हैड द क्यूरियोसिटी टू नो एवरीथिंग. सो 2 बाइनरी करने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी बाइनरी है, अपने को डिकोड करना है. अभी मेरे को समझा कि इनपुट में जो आंसर है उसको फ्रॉम से लेकर बाइनरी में, लाइक नॉर्मल एसकाई वैल्यूज में चेंज करना है. सो यहाँ पे हमेशा फ्रॉम वाला यूज होगा इफ यू वांट टू डिकोड, एंड इफ यू वांट टू एनकोड टू वाला यूज होगा. तो ये बाइनरी है. लेट्स ट्राई सम बाइनरी आउट. इफ यू गाइस वांट टू डू इट इन योर PC, आई हैव पेस्टेड इट. नहीं यार, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कारण. या कॉपी पेस्ट द होल बाइनरी एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. नेक्स्ट वन. सो इफ यू सी यहाँ पे ना, बेस 64 किस किस को पता है? किसी को नहीं. ओके. सो यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग मिली है,
ये स्ट्रिंग को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ यार? मुझे नहीं पता ये क्या है। चल, मुझे बाइनरी पता था कि कैसे बाइनरी यूज होता है, बाइनरी कैसे दिखता है, बट मुझे नहीं पता ये क्या है। विल ट्राई एआई, चैट जीपीटी, एंड वी कैन यूज बार्ड एज वेल। तुम लोग को सोल्सेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना गूगल यूज करना है उतना यूज कर लो। आई विल यूज बार्ड एज वेल बिकॉज दोनों, एक चैट जीपीटी क्या है, ओल्ड डेटा पे बेस्ड एआई लैंग्वेज है। अभी बार्ड क्या है, नए डेटा पे बेस्ड नया आंसर देता है, बट ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अनस्टेबल, उसके आंसर्स नहीं आएंगे, राइट? विल कंपेयर बोथ। ओके, सो चैट जीपीटी को दूंगा मैं, व्हाट इज दिस स्ट्रिंग? और सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे से कॉपी करता हूँ, एंड आई पेस्टेड इन इट इन बार्ड एंड गो। बार्ड थोड़ा ज्यादा सोच रहा है यार। ओके, लेट इट थिंक। सो इसने मुझे बता दिया इंस्टेंटली, बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग है। ओके, सो इसने मुझे बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग बता दिया। सो बट हियर्स द कैच, मैंने यहाँ पे बेस 64 डाला, फ्रॉम फ्रॉम वाले ही डाला, बट नहीं हुआ यार। क्या प्रॉब्लम है? I see them. नहीं हुआ। मुझे चैट जीपीटी जीपीटी ने तो बताया बेस 64 है, बट यहाँ पे नहीं हुआ। वाई? बिकॉज चैट जीपीटी रॉन्ग है। हाउ? सी, मुझे बार्ड ने बराबर आंसर दिया। इट इज बेस की ही फैमिली है, बट 32 है। अभी मैं चीट शीट के थ्रू बताऊंगा व्हाट इज बेस एंड स्टफ, बट यहाँ पे 32 है। इफ यू कंपेयर, इसने मुझे रॉन्ग दिया, चैट जीपीटी इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इसके हिसाब से अगर स्ट्रिंग के एंड में इज इक्वल टू है, इट इज बेस 64, जूना डेटा। एंड अकॉर्डिंग टू बार्ड इट लर्न द वोल्ट स्ट्रिंग। इट बहुत सारा कैलकुलेशन किया, इसलिए टाइम ले रहा था। यहाँ पे उसने बताया कि बेस 32 है। विल ट्राई बेस 32, फ्रॉम बेस 32। ये हमेशा क्लियर करना, यहाँ पे क्लियर करते हैं, फिर यहाँ पे बेस 32। सी, वी गॉट द फ्लैग, वी गॉट द एक्चुअल मीनिंग। गॉट इट? दैट्स हाउ यू यूज एआई। कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहना, बट यू हैव टू यूज इट टू लेवरेज इट। ओके, हेलो? Yes, yes. Yes, या, yes, yes, yes. Got it, got it. Yeah. so this is how you use AI to like leverage your CTFing skills and stuff. Can I ask So a query? ways, हाँ हाँ अभी बेस 32 बेस 64 कहीं ना कहीं हम ये बेसिस की बात करें ना, जो कि लाइक यू नो नंबर नंबर लिखने के तरीके हैं। बेस 10 जैसे हो हाँ गया, जो अपन नॉर्मल हाँ नंबर हाँ, जैसे लिखते हैं। एंड यप बेस यप। 2 जो बाइनरी के लिए हो गया। बेस 16 जो कि हम्म, हेक्साडेसिमल के लिए हो गया। यही चीज होगी, राइट? या सुन सुन, ओके। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो एनकोडिंग के क्रिप्टोग्राफिक वर्ल्ड में बेस फैमिली है। अभी बेस फैमिली क्या है? वेनर यू, बेस फैमिली इन्वेंट इसलिए यूज हुई थी कि एच टी टी पी नहीं निकला था, एच टी टी पी एस नहीं निकला था। So as you may have heard, HTTP is not good for security. उसमें सब clear text में जाता है। तो what people did, they used the encoding format, base 16 use करा, किसने base 32 use किया। So at least एक delay मिल जाए कि instantly decode नहीं होगा, but थोड़े देर बाद होगा। They had to identify that stuff. But उतने टाइम में वो change भी हो जाता था कि कौन सा बेस यूज हो रहा है। सो बेस में we are gonna use three families base के, base 16, 32 and 64. How to identify those? base 16 को identify करना बहुत easy है। उसमें सिर्फ अपर केस यूज होता है, एंड नंबर्स यूज होते हैं बस। नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, 9 के आगे ABCDE, सिर्फ 15 तक। ए स्टैंड्स फॉर 10, बी स्टैंड्स फॉर 11, सी स्टैंड्स फॉर 12, ऐसा।
इफ यू रीड दिस स्ट्रिंग, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, पैडिंग नहीं है। बेस 16 में पैडिंग नहीं होती। पैडिंग में मतलब बेसिकली एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे इज इक्वल टू रहेगा नहीं, दैट इज बेस 16। सो उसका हेक्साडेसिमली वैल्यूज रहता है इसमें। सो दैट्स बेस 16 एंड बेस 32 इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बेस 16। उस पर पैडिंग होता है बेसिकली इज इक्वल टू एट द एंड। उसमें थोड़े ज्यादा लेटर्स रहते हैं, फ्रॉम अपर केस ए टू जेड प्लस नंबर्स 1 टू जो भी रहेगा वो, मतलब 1 to 9, और उसके आगे A B C D वो वैसा, वो सब उसमें इंक्लूड करता है। अपर केस न्यूमेरिक अल्फाबेट्स। अपर केस न्यूमेरिक अल्फाबेट्स का अर्थ क्या है? बेसिकली अपर केस वैल्यूज विद नंबर्स, दैट्स इट। और बेस 64 द मोस्ट कॉमन वन नाउअडेज। इसमें और ज्यादा वर्ड्स है। कैसे? अपर केस भी है, लोअर केस भी है, पैडिंग भी है, इज इक्वल टू भी है। सो बेस 64 को आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी है। अपर केस रहेगा, लोअर केस इसमें क्या रहेंगे? कैरेक्टर्स रहेंगे, और इज इक्वल टू रहेगा। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई इट इज अ बेस 64 स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे सीफर्स में हेक्स, डेसिमल और ऑक्टल नंबर्स आते हैं जिनको कन्वर्ट करना रहता है। आई होप कि अपन ने डेसिमल बाइनरी किया था। सो हेक्स में क्या रहता है? नहीं, हाँ हेक्स में तो बाद में तुम लोग गूगल कर सकते हो। हेक्स थोड़ा हार्ड है बताना थ्रू गूगल, यू नो, फेस, ऑनलाइन मीट के थ्रू। डेसिमल में क्या होता है, ऑक्टल में क्या होता है? यहाँ पे ऑक्टल में क्या होता है, 1 to 7 वैल्यूज रहते हैं, बट वो 1 to 7 वैल्यूज आर यूज टू इंडिकेट इंडिकेट द नंबर ऑफ एन लेटर इन ABCD। तो यहाँ पे 1 to 4 है। इन सब का एडिशन जो रहेगा वो वहाँ पे वर्ड रहेगा, वो वहाँ पे वर्ड रहेगा, नहीं तो फिर सेंटेंस रहेगा, एक्सेट्रा। सेम इन डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है? सिर्फ यहाँ पे 0 to 7 नंबर्स यूज हुए, बट यहाँ पे डेसिमल में 0 to 9 यूज होगा, 0 to 8 यूज होगा, 0 to 9 यूज होगा, सॉरी। या 0 to 9 यूज होगा, द मैक्सिमम नंबर विल बी 9। फिर हेक्स का तुम लोग गूगल कर सकते हो, हेक्स मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एंड नाउ मोर्स कोड। Between you guys have to use all of this to solve Solstice, but it's gonna be fun. You can have hints and stuff. So यहाँ पे Morse code है। Do anyone know about Morse code? कभी सुना है, कभी देखा है, कभी यूज किया है? मिलिट्री इंटेलिजेंस। यूज नहीं किया है, सुना है। या मिलिट्री इंटेलिजेंस में। मोस्टली मिलिट्री ज्यादा यूज करती है, नहीं तो फिर डीफ पीपल, नहीं तो फिर टेलीकम्युनिकेशन पे। जब फोन नहीं हुआ करते थे, वी यूज टू यूज अ पेजर। पेजर में हमें डॉट 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 डैश ऐसे यूज करना पड़ता था। सो दैट एरा, उस टाइम में मोर्स कोड निकला था। अभी अपन यहाँ पे मोर्स कोड डाला, फ्रॉम मोर्स कोड टू नॉर्मल, दिस इज सम प्लेन टेक्स्ट। अभी इसको मैंने किया था कन्वर्ट इसमें, मोर्स कोड में। मोर्स कोड को कम्प्लीटली अलग दिख रहा है, प्लेन टेक्स्ट कम्प्लीटली अलग दिख रहा है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई बेस 64, बेस 32, बेस 16, मोर्स कोड, हेक्स, ऑक्टल एंड डेसिमल एंड बाइनरी? एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर लोगे। डी कोड क्या करना है? डाउट इनपुट ही देना है। डाउट ना हाँ एक्चुअली हाँ, अभी भी बेस 32 एंड बेस 64 में एक थोड़ा डाउट है, या लाइक हाउ टू डिफरेंशिएट। 32 एंड 64 क्लैरिटी नहीं है इतना। ओके देख, 32 में क्या है पता? 32 में सब अपर केस ही होगा, अपर केस ही होगा। नंबर्स रहेंगे, अपर केस होगा, और पैडिंग रहेगी। पैडिंग मतलब बेसिकली एंडिंग में इज इक्वल टू। बट बेस 64 में, बेस 64 ना, बेस 64 एंड 32, यस। बेस 64 में लोअर केस भी रहेगा, अपर केस भी रहेगा, नंबर भी रहेगा, पैडिंग भी रहेगा। समझा? ओके। डिफरेंशिएट कर पाओगे? कूल। बेसिकली बेसिकली एक में सब अपर केस है, एक में सब दोनों है, अपर केस लोअर केस। इफ यू कैन सी, यहाँ पे W छोटा भी है, यहाँ पे W बड़ा भी है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी है। बट यहाँ पे तुम लोग को कभी कहाँ पे भी छोटा नहीं दिखेगा, लाइक लोअर केस नहीं दिखेगा कुछ भी, सब अपर केस में रहेगा। सेम विथ बेस 16। उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज ज्यादा रहेंगे,
और हेक्साडेसिमल वैल्यूज रहेंगे बेसिकली ज्यादा, एंड अल्फाबेट्स थोड़े कम दिखेंगे बट एक दो दिख जाएंगे बीच बीच में। आई होप यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम नाउ। यस। या सो अभी लेटर नंबर वाला तो मैंने पहले ही कर दिया था। लेटर नंबर वाला सबसे इजी है। इफ आई गिव यू अ शीट विल यू बी एबल टू क्रैक इट? मुझे सिर्फ यस। इसमें डाल दो, चैट में डाल दो कि तुम्हें क्या लग रहा है वो है यूजिंग दिस इमेज। वेट, शिट, लेटर नंबर्स, ये लेटर, ये नंबर्स है, वहाँ पे लेटर्स भी है ऊपर। जस्ट टाइप इट इन द चैट, और टाइप होने पे कोई तो मैसेज डाल दो, लाइक वॉइस चैट यूज करो, नहीं तो वो लेटर्स नहीं दिखेंगे। अरे वही है, सेम आउटपुट है नीचे, जो ऊपर लेटर नंबर है ना वही है। अभी यहाँ पे इसको, इसमें डिफरेंस कैसा होता है पता है? अगर एक वर्ड कंप्लीट वर्ड रहेगा ना उसके बीचेस में डैशेस रहेंगे, और अगर वर्ड छूट गया मतलब टूट गया बीच में, तो उसके बस बीच में एक गैप रहेगी। सी, यहाँ पे एक गैप है, मतलब नो बडी वर्ड कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कैन का वर्ड आया, ये तीन, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर क्रैक के बीच में स्पेस है। सो ये लेटर एनकोडिंग हो गया। गुड, गुड, गुड। हेलो। अगर डबल स्पेस रहेगा तो? डबल स्पेस रहेगा तो वो क्या ही बोलो, अभी एरर रहेगा। ओके। डबल स्पेस उसका मीनिंग नहीं रहता लेटर एनकोडिंग में। लेटर में सिर्फ वर्ड को उसके सिग्निफिकेंट नंबर के साथ चेंज करना होता। हम्म। अभी थोड़ा हार्ड है ये। ये स्ट्रिंग दिख रही है इतनी बड़ी, वी हैव टू क्रैक दिस। विल यू बी एबल टू क्रैक दिस? यस, ट्राई कर सकते अरे हैं। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, अपने को ये क्रैक करनी है, कैसे पता है? और एक वेबसाइट है, अपने को एआई नहीं जम रहा ना, एआई बहुत आड़े टेढ़े आंसर दे रहा है, तो ये डिकोड करके वेबसाइट है, इस पे जाओ, अरे इस पे मत जाओ, साइफर आइडेंटिफायर पे जाओ उसके, डिकोड के, यहाँ पे सिर्फ साइफर डाल दो, एनालाइज करने बोलो। अभी इवन दिस इज नॉट द मोस्ट इजिएस्ट वे टू डू इट। व्हाई? बिकॉज वो सिर्फ मुझे पॉसिबिलिटी दे रहा है। बेस 62 एनकोडिंग है, साइफर डिस्क विल है, अफाइन सिफर है, तो विल विल ट्राई बेस 64। इसको मैंने इनपुट दिया, फिर इसको मैंने बेस 64 कर दिया, फ्रॉम कर दिया, मोर्स कोड को निकाल दिया। ऊ, हुआ कुछ तो अलग, आउटपुट आया, आया कुछ तो अलग, मतलब वी आर ऑन द राइट पाथ। मॉर्स कोड आ गया। या अभी इसको कॉपी करेंगे, इसको वापस पूछेंगे कि पता भाई ये क्या है, एनालाइज। अभी यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिया, टैप कोड साइफर है, टैप कोड साइफर को अलग नेम है मॉर्स कोड, बाइनरी कोड है, एस्काई वैल्यू है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बार कोड जनरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं नीचे। ब्रेन फॉक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उसमें भी एनकोडिंग होती है। वो कैसी है पता है? लिटरली उसमें एनकोडिंग इज लाइक दिस, नहीं वर्ड्स नहीं यूज होते, ऐसे, फिर ऐसे, 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 दिस इज दैट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, ये इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो बेसिकली दैट, अभी इसमें टैप कोड साइफर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बोला, तो विल ट्राई, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है? MOR ऐसी नहीं, टैप कोड साइफर डी कोड, नहीं, अभी ये तो कुछ तो और ही है, इन्होंने निकाल लिया मैंने। फिर 60, नहीं वो क्या था? मॉर्स कोड। या सॉरी वेटेड, नहीं मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो लाइक एक फ्लो बन जाता है तो वो अच्छा रहता है ना, समझ में आता है सबको। बेसिकली रहने दो, अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट इट यहाँ पे, MORSE
फ्रॉम मॉर्स कोड। अभी पूरा आउटपुट ही चेंज हो गया। मुझे आया बाइनरी। बाइनरी तो पता है मेरे को। यहाँ पे डाल दूंगा बाइनरी। अभी एक के बाद एक करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बट ये बाइनरी नहीं था यार, कुछ तो रैंडम डेटा आ गया। विल ट्राई वापस। ये क्या है? विल आस्क इट अगेन। स्काई कोड है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी। स्काई कोड। इसका सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, वहाँ पे रेक्टेंगल का पूरा भर गया था। सो आई प्रोबेबली अज्यूम कि वो स्काई है। अरे यार, स्काई कोड ही तो है। ओह वेट, सही। दिस, ये नहीं है, ये नहीं है। दिस वाज इन द वुल फ्लो। वेट, वो कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट्स या, एक सेकेंड। टकशाला एंड, नहीं ये तो डिकोडिंग का है। नहीं ये भी नहीं। न, या सो मेरे पास इसकी चीट शीट थी, मैं भूल गया कहाँ पे रखी है मैंने। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एनकोडिंग रहेगी। अभी ये मल्टीपल है तो ये बाइनरी हो सकती है। बाइनरी के बाद अगर वो रॉन्ग दिखा रहा है तो वो रॉन्ग हो भी सकती है एक्चुअली। लाइक रॉन्ग एक्चुअल राइट आंसर भी हो सकता है, फिर इसके ऊपर एक कौन सा तो अलग हो सकता है। पॉसिबिलिटी हजार है, यू जस्ट हैव टू आस्क क्या है। अभी मैंने बाढ़ को पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। सी, बाइनरी है वो, एसका टेक्स्ट नहीं हो रहा कन्वर्ट। या दिस वाज द एक्चुअल मैसेज, हेलो हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ टेस्ट मैसेज। मैं वही बोला, कभी कभी वो साइबर शेफ भी एक्ट अप कर देता है, उसके मॉडल्स ऑन ऑफ होते रहते हैं। सो दिस इज हाउ यू लाइक डीकोड स्टफ। मल्टीपल एनकोडिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन सोल्स्टिस। सो सीफर वाला हो गया। एनी डाउट्स इन सीफर? लाइक एक चीज है जो तो अभी में मैं लाइक क्लियर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। हमने स्टार्टिंग में हेक्स देखा था, हाँ, एंड देन नंबर सिस्टम्स में भी हमने हेक्स देखा था, तो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, राइट? या बेसिक्स है ना? हाँ, क्या बेसिक्स है बेस? कि बेस बेस सिक्स कौन थोड़ी सा है? है। क्या बोल रहा नहीं नहीं, हेक्स का बेस कौन सा है? कि वो टोटली है? डिफरेंट है हेक्स, नॉमिनेशन? हेक्स डजंट कम इन बेस फैमिली। हेक्स अलग ही एनकोडिंग ओके है। ओके बेस ओके में सिर्फ, बेस में बहुत सारे आते हैं, लाइक बेस 64 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 97 हो गया, 43 हो गया। बट द मोस्ट कॉमन वी आर गोना बी यूजिंग इज 16, 32 एंड 64। एक्चुअली आई हैड टू टेल यू गाइस दिस बिकॉज बहुत सारे एनकोडिंग टाइप है, नहीं कर पाओगे ओके। तो अगर लाइक अगर कहीं वी ना डिडंट कहीं गिव ये सब, क्लू। ओके, तो लाइक ये हर एक चीज डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन के लिए है, सारे नहीं, बेस की ये फैमिली के एंड एनकोडिंग नहीं हेक्स है। पे सब। नहीं नहीं नहीं, बेस इज एनकोडिंग। एनकोड एंड करता है बेस। It ओके basically converts normal text to hexadecimal values with padding। मतलब basically वो hexadecimal का भी multiplication है। जितने ज्यादा is equal to उतने ज्यादा multiplication। ओके, सो डेटा लाइक एनकोडिंग एंड विजुअलाइजिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, Yeah. ऑब्वियसली, राइट? So ओके। so will you be able to crack this, anything related to CFOs now? Just put a thumbs up in chats Yeah. so I can know you guys are Yes. actually attending.
Uh, I'll wait for 2 minutes so everyone can put. Yep, everyone's listening. Nice. So यहाँ पे सीफर का पार्ट खत्म हो गया, अभी वेब का लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये एक पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट है, इस पे तुम लोग जाके है ना खुद खुद भी देख सकते हो। अरे यार ये नोटपैड का प्रॉब्लम, एनकोडिंग का, एनकोडिंग नहीं फॉर्मेटिंग का। You can just click on the link वो स्लैश एक्स्ट्रा आ गया। so we'll live solve it in front of you। I'll live solve it। Firefox, अरे नहीं Firefox, okay, control shift and incognito हुआ ना चालू? नहीं, control shift and yeah, if you visit the URL you're gonna be introduced to this page। अभी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। वेलकम, where are your robots? Can you read the text? Can you see my screen? Yes, yes, yes. सब लोग देख पा रहे हैं, सब लोग ये रीड कर पा रहे हैं। What's the odd word here? Read it. Robots. Yep, exactly. Now I want you guys to Google what's robots in web hacking, नहीं तो फिर web exploitation। Quick, quick, be quick, and tell me on mic, please. Anyone aside Aranjan and Harshit? This protocol aims to regulate the behavior of automated crawlers. Okay. So what do you think कि ये यूज क्यों होता है? रोबोट्स के आगे कुछ तो और आया रहेगा, उसका एक एक्सटेंशन आया। .txt. Yep. What do you think कि robot.txt is used for? ओके, आई विल टेल यू कि देख गूगल क्या करता है, गूगल के क्रॉलर्स रहते हैं, वो वेबसाइट्स को कंटिन्यू क्रॉल करते रहते हैं फॉर न्यू डायरेक्टरीज, या फिर नई कौन सी फाइल अपलोड हुई रहेगी उस वेबसाइट पे कि नहीं। अगर समझ मैंने यहाँ पे सम रैंडम वेबसाइट डाल दिया, तो अभी गूगल के क्रॉलर्स क्या करेंगे, अगर मैंने इस पे दबाया, वो इट विल विजिट इट। अभी इसके अंदर मैंने प्लीज दबा दिया तो ओके, नेवर माइंड, नेवर माइंड। ओके, तो रैंडम कोड जनरेटर है यहाँ पे, फिर रैंडम कोड जनरेटर आयो के अंदर एक डायरेक्टरी है रैंडम वेबसाइट जनरेटर, राइट? सो व्हाट डोज crawlers do is continuously visit those websites to check if there is a new directory or a new file is। अभी तुम लोग बताओ मुझे, मैं को robot.txt डालना है, बट मैं कहाँ पे डालूँ? डायरेक्टरीज के आगे स्लैश में आगे। ओके, नाइस। robots.txt, नाइस। अभी यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे सिर्फ दिस अलाउ किया है। अब मुझे बताओ, यू आर अ वेब डेवलपर, लेट्स अज्यूम, एंड यू डोंट वांट शो समथिंग इन योर वेबसाइट टू सम पर्सन, इसलिए तूने डिसेबल कर दिया क्रॉलर को। तो लाइक गूगल पे लोगों को दिखाना नहीं है, इसलिए तूने क्रॉलर को डिसेबल कर दिया। तो उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा सीक्रेट, राइट? दैट्स व्हाई यू डिसेबल्ड गूगल टू क्रॉल इट, नो? So we'll try Yes. visiting the website. We'll try visiting the website. Yep, there is a flag. We won the web CTF. बट ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मैंने ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। तो ये वन वे है, रोबोट डॉट टी एक्स टी का एनालाइज करना रहता है। फिर अनदर वे इज, ये पूरा ब्लैक है वेबसाइट, इसको जूम आउट करना सबसे पहली बात। वेबसाइट पे विजिट विजिट करोगे, रिडायरेक्ट होगे, लिंक मिलेगी, तो जूम आउट करना पहले वेबसाइट को, सी इफ की वेबसाइट में कुछ और है क्या।
या दैट इज द फ्लैग। सो किसी इफ वेबसाइट में और कुछ टेक्स्ट है क्या? अभी मुझे दिख नहीं रहा यार, वाइट ही दिख रहा है सब। मैं कंट्रोल ए करूंगा, अभी कुछ भी वेबसाइट पे टेक्स्ट रहेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर इसका मैं सोर्स कोड ही एनालिसिस करूंगा। चलो। इनका नहीं था कुछ। हाँ हाँ, वो नहीं था बिकॉज इसमें ओह। नहीं है। इसमें नहीं है, बट इट इज अ कॉमन प्लेस टू हाइड फ्लैग्स। नहीं तो फिर नॉर्मल इन रियल लाइफ सिचुएशन बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कमेंट छोड़ देते हैं। तो कमेंट्स लाइक हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द होल कोड एंड फाइंड एक्सप्लॉइट्स एंड स्टफ। तो कमेंट्स नहीं होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हार्ड कोडेड एपीआई की यूज कर देते हैं पब्लिकली। कौन से तो जेएस फाइल में हार्ड कोड एपीआई की रहेगी, गूगल मैप्स की। तो गूगल मैप्स की एपीआई की पता है ना, वो बेसिकली मैप्स का प्रो वर्जन यूज करने के लिए यूज होती है। जितने तुम लोग उससे एपीआई से रिक्वेस्ट भेजोगे उतने ज्यादा बिल आता है। तो आई कैन यूज दैट एपीआई की इन माई ऐप एंड मेक अनलिमिटेड रिक्वेस्ट अंटिल एंड अदर कंपनी पे सम बिल। सो ये रियल लाइफ का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे एनालिसिस करने के टाइम क्या करना है पता है? हर एक फाइल को विजिट करना है। यहाँ पे सोर्स कोड में मैं कोई एक्स्ट्रा फाइल लिखी, ओके ये दिखी, बट ये तो फाइल नहीं है, ये तो फॉन्ट्स है, गूगल के फॉन्ट्स है, ये विजिट करके फायदा नहीं। बट यहाँ पे सीएसएस की भी फाइल है, आई विजिट दैट फाइल। या सो यहाँ पे सीएसएस है, तो इसमें भी फ्लैग हो सकता है। देखो यहाँ पे फ्लैग कलर रेड, तो मुझे एक हिंट मिली ना, फ्लैग है, फ्लैग एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज वन वे। नहीं तो फिर यहाँ पे डिव के क्लास में ही तो तुम लोग को फ्लैग मिल जाएगा कभी कभी, बहुत इजीली। ये एक हो सकता है। फिर और एक था फाइल एक्सेसेस, पता है क्या किसी को? कैन समवन जस्ट क्विकली गूगल व्हाट इज एक्सेसेस एंड टेल मी इन हार्ड वर्ड्स? Access is public private protected. एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। Acha, access. Okay. कैन एनीवन रीड इट टू मी? ओके, मैं ही बता देता हूँ। सो एक्सेसेस अभी, हाउ यू डू नो हाउ ब्राउजर्स वर्क? डज एनीवन नो हाउ ब्राउजर्स वर्क? कि बताऊँ मैं? Front and back and back. Front. नो, ब्राउजर्स आर इंटरप्रेटर्स। अभी बहुत सारे वो लोग बोलेंगे क्या अल्पेश कुछ भी बोल रहा है, but they are quite literally interpreted. They interpret our HTML language and send requests to web servers for those stuff. So basically how web works is, मेरा ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो सर्वर सर्वर मुझे कोड देगा, विच इज विच इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर सर्वर। लाइक वेबसाइट का कोड देगा, हाउ द वेबसाइट विल लुक। उसका जेएस का कोड, नहीं तो एचटीएमएल का कोड, नहीं तो सीएस का कोड देगा। वो इंटरप्रेट करेगा, फिर वो मुझे विजुअलाइज करेगा। गॉट द फ्लो? गॉट द फ्लो? Yes. ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे सम डाला सर्च बार में, हम लोग ने ये पिछले टाइम का ये बनाया था। सो इसमें इफ यू विजिट पेज सोर्स, अरे यार ये दिखता नहीं है। अच्छा, इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड ओपन एवरी सिंगल डिव। ओके, ये बंद कर दिए। ये खोले अभी। यहाँ पे तो नहीं है, मतलब सोर्स कोड रिव्यू नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम ये छुपा दिया था। बट इफ यू सी सोर्स कोड में भी फ्लैग है, सी ड्यू की क्लास में फ्लैग साकुर डाल दिया। तो अभी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है बता? समटाइम्स यू माइट जस्ट डू इन जेस किस किस को आता है यहाँ पे? ओके, जेस नहीं आता, नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज में अटैक में क्या करना पड़ता है बेसिकली बता। अलर्ट एक फंक्शन है जेएस में। कभी तुम लोग ने वेबसाइट्स पे यहाँ पे ऊपर अलर्ट देखा है क्या?
ये ऐसा वाला, हाँ, दिस स्पेस इज एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। यस यस, अलर्ट तो बॉक्स, हमें यस। क्या करना है, हाँ हमें क्या करना है, इंजेक्शन पॉइंट ढूंढना है। अभी इंजेक्शन पॉइंट सबसे इजी तो मुझे सामने अपना इनपुट बॉक्स ही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाला स्क्रिप्ट, मैं यहाँ अपना खुद का कोड इंजेक्ट कर रहा हूँ सर्वर के कोड में, बट ये मेरे लोकल होस्ट पे हो रहा है। बट अभी मुझे डॉक्यूमेंट डॉट की क्यों डालना पता है, अपनी कुकी रहती है लाइक सर्वर, कभी कभी वेबसाइट्स क्या करते हैं, उनका डेटा अपने ब्राउजर पे भी स्टोर करते हैं। सी, सेशन स्टोरेज, अभी सेशन रहेगा उसका स्टोर होता है। यहाँ पे, यहाँ पे एक एपीआई है उसका थोड़ा सा स्टोर हो रहा है, शेयर्ड स्टोरेज भी रहता है लाइक सर्वर और इसके बीच में। यहाँ पे कुकीज रहता है। सी, फ्लैग का हम लोग ने कुकी डाला, बट ये तो मुझे इससे दिख रहा है। यू कैन गो, ये भी एक वे है, बट नॉर्मली एक्सेसेस में कभी कभी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करने से एक्सेसेस आता है, लाइक एक पॉपअप आता है, ओ ओ या स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट सी ओ के आई एस कुकीज, या अभी काम नहीं कर रहा बेसिकली, ये ऐसा ऊपर फ्लैग आएगा। क्या प्रॉब्लम है, काम नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, अच्छा हाँ वो कुकी होता है, ओके या, हाँ स्टेक एंड ओके, वो साइट, साइट का कोड नहीं चल रहा। ओके सो ये नहीं चल रहा अभी, हम लोग को लाइक सेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा था। इट्स क्वाइट अ ओल्ड वेबसाइट। यहाँ पे बेसिकली ये कोड डालने पे यू आर इंजेक्टिंग सम कोड ऑफ योर ओन इनसाइड द वेबसाइट टू पॉप अप एन एक्सेस सेइंग व्हाट योर कुकी इज। सो यू गॉट अ आइडिया कि मैं अच्छे से बताऊँ, क्योंकि मैं, मेरे पास दूसरी वेबसाइट है, बताओ क्या। यही इंजेक्शन अगर हाँ, बैकएंड के थ्रू किया होता तो एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते क्या उसे? बैकएंड नहीं, बैकएंड के अंदर अंदर तू कैसे करेगा, तुझे बैकएंड का इनपुट पॉइंट कैसे मिलेगा। बैकएंड का इनपुट पॉइंट अगेन लाइक इंस्पेक्ट करके स्क्रिप्ट टैग्स कोई अगर खुले रहेंगे जिसमें कोई नहीं कनेक्शंस नहीं का डेटा नहीं मिल गया नहीं, होगा तो जा सकते हैं। नो नो नो, नो नो, तेरा ब्राउजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द बैकएंड, बैकएंड सर्वर पे है, सर्वर तुझे लिमिटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए बना है। बट वेन एवर देर इज एन ID पैरामीटर, अभी इनपुट पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, बट ये बेसिक एक्सेसेस है। इनपुट पॉइंट्स इज बेसिकली URL में पैरामीटर रहता है, देखो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हाँ सम इनपुट, तो वो वहाँ पे समटाइम्स न्यूमेरिक रहता है। तो लेट्स से ID वाला पैरामीटर, ID वाले पैरामीटर में ऑफ कोर्स SQLi होगा, जहाँ पे भी नंबर्स है वहाँ पे SQLi होता ही है। और वहां पे अगर एक्सेस लाइक अच्छे से एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाए तो SQL है और गंदा वाला, तो पूरा टेबल ड्रॉप कर सकता है वहां से। ओके। सो दैट इज इट बेसिकली। तो डू यू एसक्यूएल गाइस इंजेक्शन के लिए वांना इंजेक्शन पॉइंट कहाँ से मिलता है? इंजेक्शन पॉइंट, वही तो वो ढूंढना पड़ता है। एसक्यूएल इंजेक्शन वो के लिए लाइक यूजुअली कहाँ पे दिखता हो मिलता हो? अभी लेट्स से तेरा प्रोफाइल विजिट करेगा ना तू, तो URL हाँ में नहीं तो बैकएंड में एक URL लोड होगा, इज UID नहीं तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू UID इज इक्वल टू, तो उसके आगे जो भी UID रहेगी लाइक तेरी प्रोफाइल ID, उसको उसके जगह तू एक कॉमा कॉमा डाल देगा। अगर इज इफ इट इज वर्नेबल तो एरर आएगा तुझे, फिर एरर बेस्ड टू SQLi कर सकता है एक्सेट्रा। ओके नाउ ओके। यू गाइस वांट बेटर एक्सेसेस का एक्चुअल एग्जांपल चाहिए ना, आई विल शो यस। यू।
अभी यहाँ पे इफ यू कैन सी एस इज इक्वल टू कुछ तो है, मतलब बेसिकली एक सर्च पैरामीटर है, वो पैरामीटर की वैल्यू यूआरएल में पास हो रही है। तो इफ आई डू अल्पेश एंड इफ वी इंस्पेक्ट एलिमेंट और यहाँ पे कंट्रोल फाइंड अल्पेश 6 बार रिफ्लेक्ट हुआ है। अभी इफ यू कैन सी सर्च रिजल्ट फॉर अल्पेश में यहाँ पे डबल कोट है, यहाँ पे मेरा अल्पेश रिफ्लेक्ट हुआ है और यहाँ पे सिंगल डबल कोट होके बंद हुआ है। दूसरे बार में एक डायरेक्टरी सर्च हुई है, तो डायरेक्टरी सर्च को तू कर कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो बाकी इसमें भी कुछ हुआ नहीं है, लाइक इतना ही है। या सो हाँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट वन, यहाँ पे H1 में क्लास टाइटल डाल दिया और सर्च फॉर अल्पेश डाल दिया। सो व्हाट आई कैन डू, मैं अगर इनपुट में थोड़ा सा चेंजेस करूँ, सिंगल कोटेड कॉमा डबल कोटेड कॉमा, पहले वाले टैग को मैंने बंद कर दिया, मैंने यहाँ पे मेरा खुद का टैग खोला दैट इज बेसिकली स्लैश स्क्रिप्ट, और यहाँ पे भी स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे अलर्ट, अलर्ट में DOCUMENT.CO क्या है, नहीं कुकी नहीं चलेगी, मैंने लॉगिन नहीं किया इस पे। या प्रोबेबली इट विल वर्क। यप, देखा, एक एक्सरसाइज आ गया और मैंने इस जगह क्या किया बता, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन डाला, मतलब अभी डोमेन खुद का यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये मैंने इसमें इंजेक्ट नहीं किया, ये मैंने सर्वर में इंजेक्ट किया। अगर मैं ये लिंक किसी को भी बंदे को भेजूंगा, जैसे मैंने इनकॉग्निटो टाइप में खोला, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई, इट्स लोडिंग। सो एक पॉपअप आएगा। नाउ व्हाई डू यू थिंक ये वर्नेबल है, बहुत गंदी है, मुझे रीजन पता है। व्हाई डू यू थिंक कि हो सकता है ऐसा? बेसिकली इन अ नटशेल आई कैन स्टील एनीवन्स कुकी, और उनकी कुकी कुकी मतलब अपन जब सेशन में लॉगिन टेम्पररी करते डेटा हैं ना, फ्रेम। हाँ हाँ, तो मैं कुकी कुकी चेंज करके उसका सेशन हाईजैक कर सकता हूँ। गॉट इट? यस। अभी यहाँ पे मैंने, only if you are able to use document dot session ना तभी like वो ना 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 possible ना होता। ना, बेसिकली वहाँ पे एक्सेसेस रहेगा उस वेबसाइट पे, तो मैं कर पाऊंगा, उनकी कुकी ले पाऊंगा। अभी मैंने ओके। ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया, एक्सेसेस फायर वाले सेक्शन में देख लो, ये कौन से डेट का है, सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अरे यार वो हजारों है। ओके, सो बेसिकली ये अलग वाला है, इसकी आईपी अलग है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो पहला वाला यूआरएल ले लिया और इसमें मैंने सर्च पैरामीटर में मेरा नया वाला डाल दिया, एंटर किया। इस बार कुछ नहीं आया यार, ऐसे क्यों? आया आया आया, नहीं नहीं, ये मेरा है, ये उसका नहीं है, ये मेरा एक वेब बुक है बेसिकली। सो इफ आई रिलोड, पेलोड्स नहीं, एक्सेस फाइल्स, ये देखो, ये देखो 3 4 5 अलग अलग बार बहुत हुए आईपी, मेरे आईपी से बहुत फायर हुए। मेरी आईपी देख लो यार, कुछ नहीं होगा। सी यहाँ पे पहले 7 थे, अभी 8 हो गए रहेंगे, थोड़े देर में होते हैं वो। ब्लाइंड एक्सेस क्या करता है, वेबसाइट से मेरा इधर का पेलोड, लाइक ये जो पेलोड यहाँ पे होस्टेड है, उसको फेच करता है। ये देखो नया वाला, यप, 103, ये नई आईपी है मेरी, ये जूनी थी। ओके, ये अभी हुआ फायर, गॉट द एक्सेस थिंग, राइट? सो वाज द सेशन बोरिंग? आई गेस इट वाज काइंड ऑफ, ऑनलाइन था इसलिए Yeah, it बोरिंग था, wasn't. राइट?
नहीं नहीं, अरे बोरिंग तो नहीं, नहीं लगा। वो तो टेक सेवी पीपल के लिए नहीं था, बट लाइक पीपल आर क्वाइट, नहीं तो सो गए भी रहेंगे कुछ कुछ. Okay, then that was the whole session. You gotta use all of this during solstice. Okay? ओके, Sure. अच्छा अल्पेश, ये हाँ एक्सएसएस हाँ. का जो साइट लिंक है वो शेयर कर सकता है टू चेक? नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ प्राइवेट पर्सनल प्रोग्राम. ये मुझे नहीं, मेरे को अलाउ नहीं किया था ये दिखाने में, मैंने दिखा दिया. ओ डू नॉट डू नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट वेबसाइट. मेरे नहीं, को एक्सएसएस दिखाना नहीं था. एक्सएसएस हंटर तुमने कुछ यूज किया था ना? हाँ, वो भी मत यूज कर, वो तेरे काम का नहीं है. वो अगर तू कुछ कर रहा है तो ही यूज का है, क्योंकि तुझे एक्सेसेस फाइंड करना है पहले, लाइक फाइंड करना आना चाहिए. और एक्सेसेस ऐसे ही फाइंड नहीं होता नॉर्मल वेबसाइट्स पे. इट्स काइंड ऑफ अच्छा, डेंजरस टू एट द सेम टाइम, क्योंकि तेरी भी आईपी लीक हो सकती है. ओके। नहीं, बट अगर मैं खुद ही के ऑर्गेनाइजेशन का ट्राई करो तो देयर वोंट बी एनी हार्म, राइट? जस्ट सेइंग। हाँ, वो कर सकता है, बट लाइक ब्लाइंड एक्सेसेस टू डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सेसेस यूज करता है. तू नॉर्मल पेलोड डाल देगा वहाँ पे स्क्रिप्ट का तो भी होगा एक्सेसेस, अगर वरनेबल लेगा तो. ओके, नहीं, वर्नरेबिलिटी तो यहाँ पे दुनिया भर की है, क्योंकि मैं खुद कोड कर रहा हूँ तो आई माई सेल्फ नो कि यार इश्यूज बहुत रहेंगे। तो दैट या कैन बी दैट्स वन इजिली वे टू फिक्स्ड बाय थिंक। that can be easily fixed by input validation and क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन नहीं, आज क्या सीखा स्कूल में मैं भूल गया. रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशंस, ओके, राइट या. राइट राइट राइट। Okay then. Sure. That was the whole session. I hope you enjoyed. Sure. निकल ली. चलो, Yes, थैंक यू yes. सो मच Thank अल्पेश। you. Yes, yes. Thank you. वेलकम. एक क्विक वोट ऑफ थैंक्स ले लेना चाहिए था, बट नेवर माइंड। या ओमकार, टक्षला वीपी, ऑर्गेनाइजर, एक क्विक वोट ऑफ थैंक्स ले लेते। ओके, चलो बाय। Yeah, okay, bye bye. हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं?